in store for you. In the next 2 days, we have 26 expert sessions planned for all of you. And these are people from Microsoft, IBM, AWS, that is Amazon Web Services, and various other industry experts. So get ready, put your seatbelts on, and be ready for the journey. And please give a huge round of applause for yourself today.
our Major and Honorary Captain, Shri Yadvendra Singh Yadav. So, how's the Josh audience? Get the clap should not stop. Please clap, guys. Yes, make it louder. Absolutely, this should be the Josh and euphoria. Thank you so much. Invoking the blessings of Ma Saraswati on the beginning of a new chapter of your journey in education is the most appropriate chord to hit. So I request all the luminaries to please come forward for lamp lighting. I also specially request Shri Amit Agarwal ji, a renowned jeweler based in Jaipur, and Mr. Aniket Agarwal ji to please join the lamp lighting. Special invitees, Shri Rahul Mangal ji, Chairman Mangal Group of Industries, Shrimati Meenakshi Mangal, Shri Aniket and Mansi Mangal, Adhyan Mangal, Shri Amit Agarwal ji, as I've already announced, a renowned jeweler based in Jaipur. Thank you so much, sir. फूल खिले हैं गुलशन में, खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में, खुशियाँ ढेरों आई। इसी खुशी को जाहिर करने के लिए अब हम आपका फूलों से स्वागत करना चाहते हैं। So I will first request Dr. Naveen Hemrajani, Team Engineering, to please welcome Subedar
our mark of respect and a small token. Thank you, Naveen sir. Thank you, Yogendra Yadav ji. I now request Shri S.L. Agarwal sir, our respected registrar sir, to kindly welcome Shri Anil Swaroop ji. Thank you so much, Registrar sir and Anil Swaroop sir. I now request Dr. Vidhi Dubey, Dean, School of Science, to please welcome Mr. Ashwin Sanghi. Thank you so much, ma'am, and thank you, Ashwin sir. Orientation 2022. So on behalf of the management, I once again welcome all of you to JCRC University. Today we are celebrating your first day on the campus along with the university completing its 10 years. Both these things are a proud moment for all of us. A special welcome to the parents whose young and exceptional kids are going to become the members of a bigger and larger family of JECRC. I will also like to use this platform to thank them for having provided their kids with opportunities to learn, to discover who they are and how they want to make a difference to the world. To the class of 2022, I am here to say a few words about the intellectual adventure that you have enrolled in. First and foremost, about the orientation program that is going to unfold over the next 2 days. You're going to witness around 26 expert sessions by the upper strata of corporates like Microsoft, IBM, AWS, Amazon Web Services, industry, specific experts from corporates guiding you on how to become industry ready, etc. Not just the orientation, your entire career in JCRC will be a roller coaster ride if you go forth in the spirit of exploration and adventure. Experiment and taking intellectual chances. It should be scary and thrilling. That's what education is. JCRC's incredibly talented faculty will be your guides and allies in your journey. You will also get new initiatives and support
supporting you in all your experiments and endeavors. Having said that, I would now request our President, Sir, to please address the gathering and welcoming the new freshmen. Our President, Sir, Victor Gandhi, Sir, is one of the pillars of JCRC University and has successfully completed 2 World Bank projects. First, Technician Education Department project and Technical Education Quality Improvement Program for engineering colleges. He has handled a plethora of work related to academics and development, including establishment of new institutions, starting new courses, curriculum development, so on and so forth. His special areas of interest in his illustrious career have been quality in higher education, accreditation, project management, education administration, to name a few. Sir has held various positions of responsibility before JECRC. He has been Vice Chancellor Shri Guru Gobind Singh Tri-Centenary University, Gurugram, Vice Chancellor Maharshi Markanandeshwar Bhim University, Ambala, Pro Vice Chancellor Manav Rachna International University, Faridabad, so on, and the list goes long. So I request Sir to please address all of us. Thank you very much. सभागार में उपस्थित सभी आत्मीय जनों को सादर प्रणाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. ऑनरेबल श्री अनंत स्वरूप जी, आईएएस रिटायर्ड, परमवीर चक्र अवार्डी, रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन श्री योगेंद्र सिंह यादव जी, श्री अश्विन सांघी, renowned author of international fame of 3 bestsellers novels, Honorable Chairman Shri O.P. Agarwal ji, Shri Amit Agarwal ji, Honorable Vice Chairperson, Shri Arpit Agarwal ji, Vice Chairman, my dear colleagues from JECRC group of institutions, and the star of today, I extend very warm welcome to all present here. It is overwhelming to see such a large crowd. We are starting our orientation program today. We have already admitted more than 3,500 students, and the number is still counting. We have 1 more month to go. So, the journey of JECRC group of institutions started in the year 2000 with the establishment of Jaipur Engineering College and Research Center, which was a private self-financing engineering college approved by AICT and affiliated to Rajasthan University. Seven schools, 24 departments. We offer 36 undergraduate programs, 22 postgraduate programs, and 21 doctoral programs leading to PhD. And today we have the privilege to welcome our 3,000 plus new family members along with these parents in this hall. Say, the young students who have joined us today, most of them have entered, they have upgraded from school to a university. And
school, all of us know, is a very controlled environment. Most of the students, they are in the age group of 17 to 18 years. And from a controlled environment, they are coming to an open environment of a university. And this is a big and huge responsibility on the part of students and the teacher. Your future is going to be shaped in next 3-4 years in your when you will be staying with us in this campus. The 2 level of elementary learning which happens in school, that is remembering and understanding. And when we talk about these 2 level of learning, then teacher has the control and teacher is very actively involved in imparting you education, and as a student, they can always keep a tab on you the way you are learning. But when you come to a university, then our level of learning goes up. The next level of learning become application, creativity, analysis, and evaluation. And when we move to this level of learning, then you have to take charge of the learning. It is not possible for a teacher today to ensure that everybody is spoon-fed and you acquire the skill of application, you acquire the skill of creation, and you apply the skill of evaluation and assessment. And see, when you move to a university, you have got now autonomy. You will not be limited to a single classroom. You will be moving from one classroom to lab, from lab to field, and you will be doing lot of activities in the university. The 4 most critical takeaways for the students in university, they are knowledge, skill, aptitude, and behavior. So when you pass out from the university, then there should be an affirmative change in your behavior, in your attitude, apart from the knowledge which you gain and apart from the skill which you acquire. So end of the day, from university, when you will move from university to world of work, then employer will be evaluating you, they will be assessing you on the basis of not only the knowledge which you have acquired from the university, not only the skill which you have acquired from the university, but also on your behavioral aspects and upon your attitude. And the autonomy which you have got today after upgrading from school to university, that should be used to excel, not to exploit. And once you take charge of your learning, then only you will be able to get the kind of skills, the kind of knowledge, the kind of expertise which you will need for placement. We have a very strong placement record in our institutions. The students, last year, they got packages, highest packages started from 44 lakhs and going down to about 5 lakhs. And you know, in general, when you talk about a 44 lakh package to a young boy in the age group of 21, 22, it is mesmerizing, and sometimes it goes to head also. But let us be clear that such positions are very limited and they will be available to less number, not to all of you available here. But all of you can reach that level provided you achieve the right set of knowledge, you inculcate the right set of skills, and you again create right set of behavior and right type of attitude in you. And you know, thus university is a place where learning is not limited to the classroom. In JECR institutions, you will find that more than half of your learning that happens beyond classroom. Large number of clubs and societies
are available, which you will be joining as per your own choice, and you will be working in those clubs and societies, and that's where you will learn your leadership skills, your time building skills, your interpersonal skills, which are the most critical to do well in the world of work. And say, when we talk about the skills to be acquired in the university, they are again divided into two categories: soft skills and domain skills. So if you are engineer, you will be working in lab, you will be acquiring domain skills. You will be able to design a vehicle, you will be able to design a machine. And if you are a, say, MBA, BBA student, you will learn how to work as an effective manager. If you are in sciences, then you will learn how to become a good researcher, how to become a good teacher. If you are a student of, say, mass communication, you will learn how to become a good anchor, how to become a good correspondent, how to create content. So all these are the domain skills. And soft skills, which are the most critical, your presentation skills, your capability to work in a team. And nowadays, say, Anchor announced a few minutes back that the batch which is sitting here today, people have come from 300 districts and 19 states. In general, when we talk about, we have students from 28 states in the country coming from more than 500 districts. And you know, when people come from a such diverse background, then their cultural belief, their religious belief, their language which they spoke, the way they dress, they are all different. And we need to respect all this diversity when we work with them in a team. And that traits you will be able to learn when you stay in this campus in next 4 years. So, when you prepare for your placement, then you need to do your efforts. You need to do smart work, and then only you will be able to reach, you will be able to acquire those goals which will make you a better professionals. In whatever profession you are going to join, you have chosen various fields. Say, if you go to Google and search what are the 10 best qualities of a engineer, what are the 10 best qualities of manager, what are the 10 best qualities of a, say, anchor, you will find all these qualities listed, and you need to acquire those qualities with us. Our curriculum which has been framed, it is outcome-based education curriculum. It is a competency-based education curriculum. When you look at the curriculum, you will find what kind of outcome you must achieve before you pass out, or what competencies you must develop in your stay with us, so that you are able to become the best professional. And you know, effort is key to the success. आप अगर एक, मान लीजिए कल गणेश चतुर्थी थी, अगर किसी को गणेश जी की प्रतिमा एक परचेज करनी है, और आप वर्कशॉप में अगर आप जाते हैं, तो उस वर्कशॉप में आप जब गुजरेंगे तो रास्ते में कुछ छोटे बड़े पत्थर आपको मिलते हैं, आप उनको पाँव से टच करते हुए, आप उनके ऊपर पाँव रख के जाते हुए आप एक शोरूम में पहुंचते हैं, और वहाँ पे आपको फिनिश्ड गणेश जी की प्रतिमाएं वहाँ पे रखी होती हैं। और जब आप वहाँ पे जाते हैं, आपके साथ कोई बुजुर्ग है, तो वो गणेश जी की प्रतिमा को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। और अगर आप उस प्रतिमा को ले लेते हैं, तो आप उसको दोनों हाथ से उठाकर सम्मान पूर्वक उस प्रतिमा को अपने घर में लेके आते हैं। तो वो जो पत्थर जिनके ऊपर आप पाँव रख के गए, और वो जो पत्थर शोरूम में पड़ा था जिसको आप लेके आए, उसमें क्या भाव बदला, उस पत्थर से मूर्ति में क्या हुआ। एक मूर्तिकार ने उसी पत्थर को छेनी और हथौड़े से एक प्रतिमा का रूप दिया, और उसके बाद वो प्रतिमा वो शेप ले गई कि हम उसको नतमस्तक होके उसको हम प्रणाम करते हैं। वैसी ही कार्विंग आप लोगों के जीवन में अगले 4 सालों में होने जा रही है। और जब हम लोग से सोने के ऊपर जब हम काम करते हैं, सोने को जब आग में जलाते हैं तो वो चंदन बनता है,
हीरो को जब हम तराशते हैं तो वो हीरा बनता है, अदरवाइज वो एक पत्थर का रूप होता है। और वो कार्विंग आपकी अगले 4 सालों में इस संस्था में होने वाली है। लेकिन जब हम एक जड़ पदार्थ की कार्विंग की बात करते हैं और जब एक जीव की कार्विंग की काम करते हैं तो उसमें थोड़ा फर्क है। हमारा 5 तत्व से बना हुआ जो शरीर है वो एक भौतिक शरीर है। उसमें जब मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा का मेल हो जाता है तो हम एक दैविक व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। और दैविक व्यक्ति की जब कार्विंग होती है तो दैविक व्यक्ति के पास स्वयं को कार्य करने का भी अधिकार है। जड़ पदार्थ अपने आप को कार्य नहीं कर सकता, लेकिन दैविक व्यक्ति अपने आप को कार्य कर सकता है। और जो आपके टीचर हैं, जिनका मूर्तिकार के रूप में जो लोग काम करेंगे आपको कार्विंग करने के लिए, उसका रोल जो है बहुत लिमिटेड हो जाता है। और आज की डेट में जो ज्ञान का अथाह भंडार, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब भरा हुआ है, ट्रिलियन ऑफ पेजेस में जो ज्ञान रखा हुआ है, किसी भी टीचर के लिए ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि वो उतना ज्ञान अपने मन में रख के और आपके साथ में शेयर कर सके। तो ज्ञान तो आपको पूरा नेट के ऊपर मिलेगा, लेकिन टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा कि वो आपको ये बताए कि आपको ज्ञान वो लेना कहाँ से है। और आप जब तक स्वयं अपनी कार्विंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, तब तक आप वो गोल अचीव कर नहीं पाएंगे जो आपको इस संस्था में आने के लिए आपने सोचा है। दूसरा एक विषय मैं टच करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस आपको कैंपस से मिलेंगे और साथ साथ कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी आपको मिलेंगे। जब आप आए हैं, कुछ लोग सीनियर, कुछ लोग आपके साथी बोलेंगे कि स्कूल में जो है बहुत प्रेशर था, ट्यूशन जाना पड़ता था, बर्नआउट हो गया, बढ़िया समय मिला है, अब इसमें रिलैक्स करते हैं, पेपर तो लास्ट के 3 दिन में पास होके अच्छा ग्रेड तो आखिरी 3 दिन में भी मिल जाएगा। लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट और डीएमसीज हैं वो लगभग वैसे ही आजकल बन गए हैं जैसी आपकी फीस की रसीदें हैं। आपका सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप कैंपस में आए और 4 साल यहाँ पे रहे। आप कितने ज्ञानवान हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने धैर्यवान हैं, ये आपकी डिग्री नहीं बताती है। और ये चीज़ आपको यहाँ लेकर जानी पड़ेगी। पुराने ज़माने में जब मैं स्टूडेंट था, बहुत पहले हमारे पाठ्य पुस्तकों में पंचतत्व की कहानियाँ हुआ करती थी और हमारे समय की जो मैगजीन थी, नंदन, पराग, बाल भारती, चंपक, उनमें पशुओं को प्रतीक बना के और कहानियों का करके एक मैसेज दिया जाता था। एक बहुत फेमस कहानी है कि एक लोमड़ी जो है वो एक शिकारी ने एक पिंजरा जंगल में लगाया था शेर को पकड़ने के लिए और गलती से एक लोमड़ी जो है उसमें घुस गई। और लोमड़ी क्योंकि चालाक जीव होता है तो जैसे ही घुसी उसको समझ में आ गया कि ये तो ट्रैप है, तो एकदम वो वापस भागी और वापस भागी, पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया तो लोमड़ी तो बाहर निकल गई लेकिन उसकी पूंछ कट गई। और लोमड़ी, आप लोगों ने जू में उसको देखा है या चित्रों में देखा है, तो लोमड़ी का जो जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा एक ट्रेट होता है वो उसकी पूंछ होती है, बहुत जबरदार और बहुत उसको माना जाता है। तो जब उसको ये लगा कि बाकी लोगों में जब मैं जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उसने क्या किया, जब वो बाकी लोमड़ियों से मिली तो उसने ये कहा कि पूंछ कटवा दो तो भगवान मिल जाता है। तो उन्होंने प्रेरित करना शुरू कर दिया कि आप अपनी पूंछ कटवाएं और आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो ऐसी कुछ कटी हुई पूंछ वाली लोमड़ीज आपके भी कहीं आसपास हो सकता है दिखाई पड़े, आपको कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट के 3 दिन में पढ़ लेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, या कल को ये एक बार एक नशा है, एक बार करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर आपको आता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। हमारे मेजर जनरल तपन कुमार दास, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और प्रोक्टर डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं, ऐसे लोगों को वो लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं कि ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले लोग गलत तरीके से आप लोगों को भ्रमित ना कर पाएँ। तो ये जिम्मेदारी भी आपको अपने लेवल पर लेनी होगी। और देखिए, आज हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें बड़ा ही रिच है। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हमारे को ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनना है,
लेकिन साथ में हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारी अपना जो मूल्य, भारतीय मूल्य हैं, उसको भी हमारे को साइमल्टेनियसली ध्यान रखना पड़ता है। हमारा वैदिक साहित्य ये बोलता है कि आप अपनी कम से कम आवश्यकताओं को रखते हुए आप अपना जीवन यापन करें। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, जो लगभग 550 वर्ष पहले लिखी गई, उन्होंने ये लिखा था कि सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर आप मटेरियलिज्म की बात करते हैं तो भी आपको उनको अचीव करने के लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। और जब ये इस प्रकार के एफर्ट आप करते हैं, सफलता हर व्यक्ति को हर समय मिलेगी ये तय नहीं है। तुलसीदास जी ने एक और बहुत बढ़िया उसका लिखा है, बाल कांड में एक वर्णन आता है, जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया और दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, भरत अपने ननिहाल में थे, वो जब वापस आए तो बहुत व्यथित थे। और उस समय एक तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो वैदिक साहित्य है, हम लोग आपको लाइफ साइंसेस पढ़ाएंगे, आपको फिजिकल साइंसेस पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल साइंसेस जो हमारे वैदिक साहित्य में हैं, उनका भी आप लाभ उठाएं। हमने इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज के रूप में 4 सब्जेक्ट का शुरू किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं। उसमें हमारी पुरानी परंपराओं के ऊपर आप लोग काम करें। आपकी फिजिकल क्लास नहीं लगेगी, आपको एक विषय चुन के उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट करना है और वहाँ सभी के सामने प्रेजेंट करना है। इस प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अब समय की सीमा को देखते हुए मैं एक बार फिर आपसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में आप अपने कर्मों के थ्रू ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, अपना धैर्यवान बने, और फिर आप अपने इन सब कर्मों से आप अपने भाग्य का ताला खोल देंगे और आप भाग्यवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, ऐसा एश्योर्ड है। थैंक्स, थैंक यू मच, नमस्कार। सर का ज्ञान अथाह सागर है जिसका कोई अंत नहीं है, और आप लोग जैसे जैसे उनके कांटेक्ट में आएंगे आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सो मच सर। आई विल नाउ रिक्वेस्ट आवर चेयरपर्सन सर श्री O.P. Agarwal ji to please address the gathering. Chairman sir serves as chairman of National Society of Engineering Research and Development also. He is a commerce and law graduate as well as a fellow chartered accountant. Recently, sir was nominated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, to be a member of the Board of Governors of Indian Institute of Corporate Affairs. Sir was the first chartered accountant from Rajasthan to be honored with this prestigious membership. He is an educationist, chartered accountant and philanthropist. He was born in Jaipur with a humble background. His father, Shri Mohanlal Khatuwala ji, was known throughout the business fraternity as a man of principles and integrity in the business arena. These are the principles also reflected in Sir. Shri O.P. Agarwal pursued the professional studies with scarce resources available in those times. His perseverance, dedication to work, and the guidance and commitment towards quality delivery has enabled for creation of many centers of excellence, including some of the highly recognized institutions like JCRC University, JCRC College, etc. He is former president of Rajasthan Tax Consultant Association as well as former vice chairman of All India Federation of Tax Practitioners. He is also a member of Direct Tax Advisory Committee CBDT New Delhi. He is the panel speaker at the Institute of Chartered Accountant of India, Rajasthan Tax Consultant Association, 40 and CII. He is also a member state Higher Education Committee, Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan, MHRD New Delhi.
He is married to Shrimati Sushila Agarwal ji, and both of them are blessed and full of gratitude to the Almighty to have given them a happy family full of children and grandchildren, upon whom both of them shower their blessings and love and their precious personal time. So I request Sir to please address all of us. Good morning, everybody. Good morning, JCRCians. Honorable Shri Anil Swarup sir, Major Shri Yogendra Singh Yadav sir, Honorable Shri Sanghi sir. I had an opportunity to speak to him for 5 minutes in the lounge. I would say two angels, my sons, Vice Chairman both, Amit and Arpit, Professor Victor Gambhir, President of the University, Directors, Heads, Deans of the University, my dear students who have come here, and their proud parents. On behalf of JECC University and as Chairman JECC University, it is my proud privilege to welcome you all in this Induction 22 of this esteemed university, which we hold every year as an induction ceremony. The galaxy of guests of honor today makes a holy trinity. मैं कहूँगा त्रिवेणी, और दोबारा मैं कह सकता हूँ कि वो त्रिदेव हैं अपने अपने फील्ड्स में. They are very prominent people. They are very kind to come here and bless us. A philosopher, civil servant, Mr. Anil Swarup, IAS, a Kargil hero, Subedar Major Yogendra Yadav, born in 1988, and recipient of Paramveer Chakra in 1999, that is at the age of 19 years, which is a teenage. Honorable Sri Sanghi Sahab, an avid writer I would say, and I have taken a kind of promise from him, and rather he has taken a promise from me, that so far he is in our library only, but now I will be reading it. Mr. Anil Swarup sir is a real diamond emerging from immense pressure on coal. We know coal things in many ways these days, things are appearing in newspapers. While he occupied the position of Coal Secretary, Government of India, he is worried about the PMO's dominance in decision making and shrinking of independent decision making. Ethical dilemma of a civil servant and no more a civil servant. Is his epoch making contribution and treatise? Subedar Major Yogendra Yadav is a real hero and not a real hero. An awardee of PVC Paramveer Chakra medal in 1999. Probably he was last army officer among a few who got PVC medal in 20th century, and there is no recipient of such award so far in 21st century. Besides this, the author Mr. Ashwin Sanghi is part of Forbes Celebrity 100 list. It's a major achievement. He has authored the treatise like the Roswell line, Chanakya chant, the Krishna key, and Magician of Mazda. He is a great storyteller, fiction thriller, and blends fact with fiction. And above all, he is a son of the soil. He is born in Jaipur, Rajasthan. So our bond and our claim with him is much higher than others in the country. On behalf of all of you, I welcome this Holy Trinity, ये पवित्र त्रिवेणी संगम का मैं स्वागत करता हूँ. On this occasion of Induction 22 at JECC University, I welcome all the parents and fresher students who have believed in JECC culture and who have kept faith on us. I assure you that we will continuously work hard to make your belief and faith towards JECC University much stronger and to ensure that it comes true. I welcome all the faculty members of JU
who are untiringly working to make today's induction program a great success. Jecrc University Jaipur was established in 2012 as a private university. It has completed a decadal journey. Much of the water has flown during 2012 and 2022. Number of students increased from 800 in 2012 to 7,000 in 2020. Faculty strength and staff strength has increased from 100 in 2012 to 7,800 in 2022. University provides higher education in the field of engineering, management, law, sciences, humanities, and social sciences, allied health, designing, mass communication, and is having affiliation with UGC, that is University Grant Commission, AICTE, NBA, NAC, NRIF, etc. Jaipur School of Economics and Jaipur School of Business are two new schools created in this session. The enormous 32-acre lush green campus of the university is laced with ultra-modern amenities, facilities, laboratories, playgrounds, hostels, mess, and cafeterias. Besides these 300 plus faculty, those faculty members are highly qualified and having focus on research imparting outcome-based quality education through the upright and updated curriculum. Industry visits in the university is incubation center, makers space, training and placement cell, alumni cell, daily newspaper named The Masses, various clubs and the differentiators and USP of Jecrc University. Quality placements in large numbers, campus recruitments, training placements and CRT opportunities to non-engineering students too, and still industrial internship are the unique features of Jecrc University. I welcome all the parents. You have raised exceptional and young people and have provided them rich array of opportunities to learn, to grow, and to discover how they want to make a difference in the world. Jecrc slogan is, build your own world and make your dreams come true. My dear students, induction program has a purpose. The intellectual adventure you are about to undertake in nation's leading university, we offer you plethora of opportunities to grow. You will have a number of opportunities to sit together with the students of your discipline, but the induction ceremony has rainbow of colors. Today you are sitting with the students of all the disciplines. In next few days, you will get opportunity to mix with the students of your school of and your department. The purpose of induction are to ice break up, knowing your university, faculty, curriculum, and infrastructure facility. Jecrc imparts quality and relevant education which is outcome-based and which is as per the National Education Policy 2020 guidelines. I encourage you to go forth in a spirit of explanation and adventure. Try new things, choose provocative classes that explore you to new ideas and alternative ways of thinking. Take intellectual chances. Select an open elective in a field you know nothing about. Make your communication and soft skills stronger through foundation courses and make your domain knowledge stronger through major course. Your experience should be scary, thrilling, and unique. That is what education is all about. Education is not only for placements, but education is for better life. Incredible talented faculty will be your mentors and allies in your exploration. They are your greatest resource. The faculty here are experts in their field. Get to know them, talk to them, ask them about your curiosity,
and queries. Tell them about your ideas. They will challenge you, bring your potential out, guide you, and that will open doors to new possibilities. Once again, my dear students, ability opens the first door. Skill and knowledge opens second door. But how do you channelize your knowledge for society at large? That opens the last door for you. Students' organization, clubs, playgrounds, athletics, exhibitions, community service programs, cultural fest will provide you opportunity of participating in activities as you will find the campus teeming and vibrant with these activities. Entire JCRC community is here to support, sustain and encourage. It is you who makes us what we are. We look forward to fresh ideas and vibrant energy with which you have joined the campus. We are all so happy to have you here that you made the decision to join us, that is JCRC University. With these words, I welcome you all once again, and I assure you of our best of the intentions in the times you stay with us. Thank you. Sir's advice, I'm sure, is very valuable for all the youngsters, and I thank you, sir, for such a deep insight that he has given to the youngsters. I will now request our very own Dhiman sir, Director Digital Strategies, to please come and introduce our guest, Shri Ashwin Sanghi ji. Dhiman sir is Director Digital Strategies and one of the youngest in the leadership of the JECRC family. Having said that, it goes to sir's credit that he has given us some of the finest decisions reflecting a careful insight. Sir is also playing a crucial role in JIC, that is JECRC Incubation Center, an initiative of JECRC. He is playing a crucial role in the student clubs and student development cell. His being around motivates the students to give their best for the clubs. Sir has also played a strategic role in various collaborations that have taken place in the university. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Honorable dignitaries on the dais, the teachers and faculty members of JECRC Foundation, parents and dear students. It is my proud privilege to welcome you all to the induction ceremony of the batch 2022. Congratulations to all the students. Congratulations on officially being inducted to the university of your dreams. Trust me, this will be one of the most important and special days of your life. And I can tell you this as I've been in your shoes as recently as 5 years ago. The responsibility of introducing Mr. Ashwin Sanghi has been bestowed upon me, but then this rather looks a little difficult, because how do you introduce someone who is so well known internationally? But I will still try to do so. Allow me to introduce you all to the first speaker of the first masterclass of your university, Mr. Ashwin Sanghi. Mr. Ashwin Sanghi is counted among India's highest selling English fiction authors, having sold over 2 million books globally, with over 1 million copies sold in his Bharat series alone. He has written several bestsellers in his Bharat series that include The Rosable Line, Chanakya's Chant, The Krishna Key, The Salcott Saga, Keepers of the Kal Chakra, The Vault of Vishnu, and The Magicians of Mazda. Many of these books have been #1 bestsellers in India and have been acquired or optioned for movies, televisions, or even web series. In addition, he has penned 2 New York Times best-selling thrillers with James Patterson, Private India, sold in the US as City on Fire, and Private Delhi, sold in the US as Count to 10. He has also co-authored several non-fiction titles in 13-step series on luck, wealth, marks, health, and parenting. He also contributes to the open ed pages of the Times of India.
He has been included by Forbes India in their Celebrity 100 and by the New Indian Express in their Culture Power list. He is a winner of the Crossword Popular Choice Award 2012, Atta Galata Popular Choice Award 2018, and the Kalinga Popular Choice Award 2021. Sir was educated at Cathedral and John Cannon School, Mumbai, and St. Xavier's College, Mumbai. He holds master's degree from Yale University and lives in Mumbai with his wife Anushika ma'am and son Raghuveer. Sir, it is an honor to have you amongst us today. We vividly remember when you visited us back in 2015 in the annual Literature Fest of Jecrc, the wonder of words, and we are all still in awe of you. I request you to take the center stage, sir. Thank you. बहुत ऊंचा हो गया हूँ, इतना ऊंचा मत करो, मैं ठीक हूँ जैसे हूँ। श्री O.P. अग्रवाल जी, श्री अमित अग्रवाल जी, डॉक्टर विक्टर गंभीर जी, श्री हेमंत अग्रवाल, श्री योगेंद्र यादव जी, श्री अनिल स्वरूप जी, my dear friend Shri Arpit Agarwal ji, faculty and students and parents of the JECRC family. You know, it was an American actor who once said that a good speech should have a good beginning and a good end, and they should be as close together as possible. So I will try and keep this short and crisp. So I was wondering, why did Arpit ji invite me here today? After all, I'm just simply a writer, a storyteller, kathakar. Why me? I don't have economic wisdom, military valor, I do not have political acumen, I do not have any economic or social or cultural sense in that sense. So why invite me, Arpit ji? And then the answer came to me. He did not invite me because I am a success. He invited me because I am a spectacular failure. You know, there was this person called Mark McCormack, and he wrote a book which was called What They Don't Teach You at Harvard Business School. It came out sometime in 1986. Maybe today, my job is to tell you what they have not taught you in school and probably what they may not teach you at JECRC in the next few years. The problem with our education system is that we teach students what it takes to succeed, but unfortunately, we do not teach them how to fail. When you as a child were learning how to walk and you fell down 100 times, did you ever think that maybe walking is not such a good idea? You got up each time until you eventually learned how to walk. Remember the inventor Edison, who said, "I have not failed, I have just found 10,000 ways that don't work." Now, I was
discussing with Arpit and Amit ji's father, Sri O.P. Agarwal, that I belong to a Marwadi Banya family. My Karm Bhumi is Mumbai, but my Jan Bhumi is very much Rajasthan. And you know, when I was writing one of my books, it was called The Vault of Vishnu, I was talking about the merchants of Samarkand, which now lies in Afghanistan, the merchants of Samarkand. And I was surprised that they had this very nice tradition. When a child was born in the house, they would touch a drop of honey to the tongue of the child. And they would touch a drop of glue to the palm of the child. The idea was that when he grows up, he should have a sweet tongue so that he can sell anything to anyone. And he should have a sticky palm so that paisa us pe jaake chipak jaye. So born in a Marwadi family is no different. जब आप मारवाड़ी घर में पैदा होते हो तो वहां पर गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होता है. There are two very important words which are whispered into your ears. O.P. Agarwal ji will relate to that. They are called debit and credit. The most two important words in that household are debit and credit. And that was the cultural context in which I was born. I started working with my father from age 13 onwards. And then when I went for an MBA to Yale University, I was the youngest person in my class, but with the maximum work experience. So, all of that was happening, but the parallel life that was going on, the parallel influence in my life, was my Nanaji. And my Nanaji lived in Kanpur. So, Nanaji was a poet, he was an author, he was a scholar, he was multilingual, and he had this wonderful tradition. He would send me one book every week to read. And he required not only that I read it, but I send him a letter saying, Nanaji, मैंने ये पढ़ा और मुझे ये अच्छा लगा या मुझे ये अच्छा नहीं लगा, and why did I like it or not like it. So whenever I would go to my daftar, वहाँ पर एक मुनीम जी थे, वो अजमेर के थे, वो टोपी, काली टोपी और धोती पहनते थे, and he would see that I am holding a book in my hand. And he would say that, beta, bookkeeping is more important than book reading. And if you must read, then read a balance sheet. At least it will get you somewhere in life. So I would go back to my Nanaji and I would say, Nanaji, ये मुनीम जी ऐसी चीजें कह रहे हैं. तो he said, देखो बेटा, तुम तो मारवाड़ी हो, तुम तो लक्ष्मी जी की पूजा करोगे. That is ingrained in you. पर एक चीज याद रखो कि there is a very, very strange relationship between Lakshmi and Saraswati. Lakshmi is always curious about where Saraswati is. If Saraswati is in this room, then Lakshmi also wants to come to this room. And if Saraswati gets up and leaves, then Lakshmi ji also gets curious कि ये वो कहाँ गई, so she also gets up to leave. So one of the short ways of getting Lakshmi is by first getting Saraswati. And he said, हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी है, हमारे जो कथाएं हैं, उनमें एक ही ऐसे जिसे कहते हैं डेटी है जो दोनों देवियों को साथ रख सकते हैं, और वो है गणेश. तो गणेश जी बीच में विराजमान रहते हैं और लेफ्ट और राइट पे देवी. तो he said, live your life like Ganesh, which probably also explains why I look the way I do, because it has been like that. But what Nanaji said was
he was trying to say that the only thing that money can give you is the freedom of not having to worry about it. And he then used to go on and he would say, but be realistic about money. You need enough to be able to live your life. And he had a very good way of saying it. He would say कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है. So I finished my MBA in '93. Then I worked for 15 years with my father in the family business. And then I ended up going on a trip to Srinagar. And वहाँ पर श्रीनगर में there is a मकबरा which is known as Rozabal. And the story around it is कि Isa Masih had actually not died and he had come and settled down in Kashmir and he lies buried there. तो कई ऐसी कहानियाँ होती हैं which completely get stuck in your head. So I spent the next 2 years researching that story. I finally, of course, became very difficult to live with. My wife said कि तुम कुछ और बात करते ही नहीं हो, तुम सिर्फ उस मकबरे की बात करते हो. She said ये कीड़ा जो है अपने सिस्टम से निकालो. Why don't you write a book on it? So I started writing a thesis, a non-fiction thesis to bring about all the facts. I gave it to my wife and I said, read it. The next morning she said, Ashwin, congratulations. So I said, oh, that means you liked it. She said, no, congratulations, because with your paper, now one does not need sleeping medication. वो इतनी boring चीज है कि मैं तो 15 मिनट में सो गई. So she said, make it into a story that people want to read. I eventually converted it to a story. And then I started trying to find a publisher. I never realized how difficult it was. During those days, if you came to my study, you would have found a bulletin board. And on that bulletin board, there were numbers, 12, 18, 30, 33, 38. So people used to come and ask me, ye kya hai? They did not know that 12 was the number of times that the first book in the Harry Potter series was rejected by publishers. 18 was the number of times that a classic called Jonathan Livingston Seagull was rejected. 30 was the number of times that James Patterson's, Stephen King's first book, Carrie, was rejected. Gone with the Wind was rejected 38 times. Chicken Soup for the Soul was rejected 33 times. And on the top of that list was Ashwin Sanghi with 47. That 47 people said, यार बख्श दो, हमें नहीं पब्लिश करना है तुम्हें. तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया. हमारे एक पंजाबी फैमिली फ्रेंड थे, वो आते थे घर पे, and he and my father would sit on the weekends and they would be sitting and drinking their Johnny Walker Black Label Scotch. And they would pour very generously for one another. How many of you know what a Patiala peg is? Patiala peg means 3 fingers, but not held this way, they are held this way. So they would pour these very large drinks for one another. And this gentleman, he said, beta kya ho gaya, tum bahut depressed lag rahe ho. So I said, uncle kya kare? वो सारे publishers और literary agents से rejection आ गए. So he said, remember one thing, beta, in life, 99% is about good luck. So I said, but uncle, then in that case, what is the 1%? That must be hard work, talent, management, efficiency, networking, skills, resources. He picked up his whiskey, took a very, very deep gulp, and he said 99% is good luck, 1% is bloody good luck.
He said, wait for your bloody good luck to come, beta. सबकी जिंदगी में bloody good luck आता है, but you cannot determine the timing. So then I went to meet a friend of mine, a dear school friend, and he told me, he said, you know what your problem is? He said, everyone talks about this rat race. Everyone is running the rat race. He said, but remember one thing, Ashwin, even if you win the rat race, you are still a rat. Do you want to be a rat all your life? And the reason I'm telling you this is because another great author started out in a courtroom where he was listening to a case as an observer. It inspired him to write a story about that courtroom trial. He tried to find a publisher but was rejected 28 times. The publisher that he eventually found agreed to print 5,000 books, which this author put into the boot of his car and took it from place to sell. Today that author's name is very well known to those who read English fiction. His name is John Grisham, and he has sold 300 million books. And there are countless examples of people who have failed. Einstein could not write until age 7. He was expelled from school and he was denied admission into the Zurich Polytechnic. He went on, of course, to win the Nobel Prize. Beethoven's early skills were so pathetic and he turned deaf, but 4 of his greatest compositions were done when he was completely deaf. The Beatles, one of the most famous groups, music bands, was rejected by Decca Records, saying that guitar groups have no future. Walt Disney, I mean, the name that we imagine with the greatest of creativity, he was fired from a newspaper job saying that he lacked imagination. Imagine telling Walt Disney that you lack imagination. Elvis Presley was rejected by Eddie Bond and was told, beta tum theek ho, tum truck driver ka hi kaam karo, because you have no singing skills. Steve Jobs was fired from the very company that he started and went on to create 2 spectacular failures. One was a company called Next, and another was a company called Pixar. And Pixar, of course, went on to become the leader of the entertainment world. And Henry Ford had 3 bankruptcies before he eventually succeeded with Ford Motor Company. So I know what it means to be a failure. It means being able to get up. I knew from all of this that was happening around me that I wanted to be a storyteller, but I could not find that formula. What would be the formula that would work? So एक दिन मैं गया हुआ था कलकत्ता to talk to a college the way I'm addressing you today. And I had the whole afternoon free. So I told the driver, I said, यार मेरी flight तो कल है, मुझे कहीं पर भी ले जाओ. He said, sir, आप मंदिर देखेंगे. Now, if you are in Calcutta and someone says, आप मंदिर देखेंगे, it is taken for granted कि वो माँ, काली माँ या देवी जी का मंदिर होगा. So he took me to the temple and it looked like a very ordinary sort of place, white walls around it on 4 sides. In the middle there was a green colored singhasan, a throne. And then when I went in, there were people doing puja and aarti and all of that. And then when I looked closely, I realized that on that throne, there was a portrait of Amitabh Bachchan. And there was a pair of shoes that he had worn for the filming of Coolie. And I pinched myself. I said, is this real? Have I actually come to a temple which is for Amitabh Bachchan? I came outside and I was waiting for my car. And a little boy came up to me
and he was selling prasad and agarbatti and all of that. But I bought one thing from him. It was a little book known as the Amitabh Chalisa. And it is lying in my library, Amitabh Chalisa. And I thought to myself, I said, Ashwin, supposing your car comes right now at a high speed, the driver loses control of the brakes and he knocks you down and you die. And you are born 1,000 years later and someone asks you, could Amitabh Bachchan have been a real man? That is the question we are asking ourselves about all our mythology heroes like Ram and Krishna. And that's the time I realized my formula, that I would take two words, myth and history, and combine them together, create a new word called mystery. Myth plus history equal to mystery. And I was lucky, I was able to do it. So today when I go to colleges, many students ask me, what is your definition of luck? I say simple. Number one, if you are lucky, you get to do what you love. Number two, if you are luckier, you get to do what you love and you're actually good at it. Number three, if you are the luckiest, you get to do what you love, you are good at it, and someone is willing to pay you for it. That is the luckiest zone to be in. But jokes apart, luck is simply preparation meeting opportunity. You are the luckiest person in life if you can treat each failure as a learning experience and get up each time after falling down. There is a very interesting story about a monk who went from India to China and taught them martial arts. His name was Bodhidharma. And Bodhidharma, when he landed in China, the Shaolin monastery did not want to accept him, so he sat there for 9 years in meditation in a cave. Now, when this story reached Japan, they called him Daruma instead of Bodhidharma. And the story was that because he sat for 9 years, his legs fell off. So now in Japan, you have a doll. It is known as a Daruma doll. It does not have legs. It only has a round bottom. So no matter how many times you punch the doll, it comes up. If you want to ask me how you should live your life, try to be the best Daruma doll, because that's what life is going to be doing. Every writer hopes that he will sell in the millions. But what makes a good storyteller? It's not writing. I grew up hearing fantastic stories from my Nanaji about sadhus. He would say, beta, हम लोग गंगा जी के तट गए थे और वहाँ पर एक साधु मिले थे और उन्होंने कहा, बेटा हमारे साथ आके ध्यान करो. तो they were sitting आमने सामने. साधु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो. हमने आंखें बंद कर दी. फिर उन्होंने 1 मिनट बाद कहा, आंखें खोल लो. हमने खोली और वो साधु थे नहीं. हमने सब जगह देखा पर वो थे नहीं. फिर ऊपर से आवाज आई, मूर्ख ऊपर देख. और फिर हमने देखा कि वो साधु जो थे वो वहाँ पर लेविटेट कर रहे थे. Now when Nanaji used to tell me those stories, I thought he was on drugs. I really thought that ये कुछ ना कुछ smoke करते हैं. But today I have realized that there are many things that I don't know. Absence of evidence is not evidence of absence. In that sense, in the early days when people in the press and media used to ask me, what is my qualification to be writing fiction? I used to say, you know what? When I was growing up and a little kid, my mother used to say that I was a bloody good liar. I could tell lies with a straight face. And that's what we fiction writers do. We fabricate lies. But
there is one important rule that if you must tell a lie, then tell that lie as close to the truth as possible. And that's why I do my research. I take 2 years to write a book in the Bharat series. It's almost like a business plan. I will start with ideation, which will take me a month or 2. Then I'll go on to the research, which will take me 8 or 9 months. Then I go into the plotting, which is almost like creating an Excel spreadsheet related to the future of a business. That can take me a couple of months. Then I eventually sit down to start my writing, which will be about 6 months, then a few more rewrites, then edits. It is truly, each and every book is Agni Pariksha. So there was one, and even after that, your Agni Pariksha does not stop, because after that you have to sell it. You have to get people to eventually read it. There was this great writer called Ernest Hemingway. He said he had a golden rule. He used to say, write when you are drunk and edit when you are sober. And so I slightly modified that. I said, write when you are drunk, edit when you are sober, start marketing tomorrow. That's the damn hangover. Because you'll realize that the worst part of it is marketing. All I want to tell you today is that when young people, when young writers come to me and ask me for advice, what I tell them is, number one, learn how to fail. Failure is not the opposite of success. It is part of the process. Second, be a storyteller, because it will hold you in good stead wherever you go. Remember, I don't remember who it was who said that the shortest distance between two people is a story. So, you know, there was this Hollywood director, his name was Alfred Hitchcock. And Alfred Hitchcock used to say that the length of a movie is related to the capacity of the human bladder. Meaning you can only stay for a movie as long as your bladder holds. And Alfred Hitchcock's words remained in my head. When I'm writing a story, I think that there are 10 people sitting around me and 3 people want to get up and use the bathroom, but they don't get up because the story is so interesting. So become a storyteller. It will help you, whether it's business, whether it's science, whether it's anything else. No matter how good you are, always market yourself. When people ask me, how did you become a bestseller? I said, I have one quality, and that one quality is what is known as Besharam. I will take every opportunity to market myself. Finally, don't lose the day job. It is very difficult to write or be creative when you're hungry. So keep the day-to-day income coming in. Remember one thing, hard work cannot be compromised. Hard work always beats talent when talent doesn't work hard. As simple as that. Luck is preparation meeting opportunity. Perseverance is not one race. It is a series of smaller races, and some of them you are going to win and some of them you're going to lose. Build a network of people around you. It was the great Kautilya who said that one wheel alone does not move a chariot. Be nice to people. You know, the same Kautilya said, always speak what would please the man from whom we expect a favor. Like the hunter who sings sweetly when he has to shoot the deer. It's nice to be important, but it's also important to be nice. And if you do succeed, then remember that you were only a medium for what you achieved. The greatest blessing came to you from Saraswati, so keep your feet on the ground and don't say, I did it. I just want to end today's talk by saying that we all are very, very lucky to be part of this great civilization that we call Bharat.
Sanatan Dharma allows 33 million deities to be worshipped. The path to realization can be yantra, tantra, mantra, or none. You can keep a figurine of Christ or Mahavira in your puja, and you can worship the Buddha as the 9th avatar of Vishnu. You bow your head while passing a temple, gurdwara, church, or dargah, because within you is ingrained the idea that all faiths are part to a divine. You can be ritualistic, spiritualistic, tantric, astic, nastic, or simply fantastic. It's your call. You can worship an idol, cow, sun, moon, fire, river, the heavens, or even another human being. You can pray in your home, in a temple, at a cremation pyre. You can be a Vaishnavite or a Shaivite. You can believe in Shakti or Bhakti. You can be vegetarian or omnivore. You can work towards Artha, Kama, Moksha. You can be straight, gay, bi, whatever you have it. You may hold that the shivling is a stone, and I may hold that, a stone is a shivling. Both of us can be welcome. We can have 300 versions of an epic called the Ramayana, but one version does not negate the other. A line from the Upanishads, Vasudeva Kutumbakam, or the world is one family, encapsulates Sanatan Dharma. What is this if not liberalism? So, what is it that I want to now end with? Just a little piece of advice in the form of a small sher, which is one of my favorites. Nazar badlo to nazare badal jate hain. Soch badlo to sitare badal jate hain. हौसला रखो तो इरादे बदल जाते हैं. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं. So I want to wish you all the very best. Thank you for inviting me here today, and I wish you all the very best in your years at JECRC, which has taken such great strides under the Agarwal family and under Victor ji. So my all the best, my God bless, good wishes. Jai Hind. The play of words exhibited by Sir was amazing. Thank you so much, sir. And I think that proves why Arpit sir chose you as our guest today. So you are a spectacular failure, but you are a spectacular guest for all of us. Thank you so much, sir. I now request Major General T.K. Das, sir, VSN, to not only introduce but also be in conversation with Subedar Major and Honorary Captain Shri Yogendra Singh Yadav ji, Paramveer Chakra Awardee. Major General Tapan Kumar Das is our proctor. He is a Vishisht Seva Medal awardee, is an alumni of the National Defence Academy. He was commissioned into the Indian Army Corps of Signals in December 1973. He has had a checkered career spanning over 4 decades, wherein he has coordinated various command and staff assignments at all levels, from small units to the Army headquarters. He holds a B.Tech degree in Telecommunication and IT from Military College of Telecommunication Engineering, Kolkata. He also holds an MBA degree in International Business from Puducherry University. He is well read and has widely traveled across the length and breadth of the country as well as abroad. For his dedication of duty to the nation and armed forces, he has been felicitated by the President of India with the Vishisht Seva Medal. He superannuated in July 2011 and took up his assignment with JCRC University. Besides taking academic classes, he has been instrumental in reshaping the process of conduct of examinations in the university.
He has also been actively involved in mentoring students for placements, going abroad for higher education. Presently, he is the Dean Student Welfare and Director Student Leadership Development and Outreach at the university, responsible for shaping young minds to become budding leaders for tomorrow. Welcome, sir. Good morning. It's wonderful to see such a sea of energy in front of you. Good morning to all the dignitaries on the stage, off the stage. Be inspired. Do you all have the fire in your heart? We at Jecrc try and expose you to luminaries, like you see on the dais today, who will, through their work that they do, and as they have excelled in their life, inspire you. So wherever you are, try and get inspired by what you see around you and people like what you see here. So, I am singularly privileged and honored to be your host in conversation with Subedar Major and Honorary Captain Yogendra Singh Yadav, Paramveer Jecrc. Welcome once again from all of us in the Jecrc fraternity. He is a real war hero, a living legend. Let me give out his profile to you before I ask him a few questions. So Yogendra Yadav was born in a modest family of an army man in 1980 in village Aurangabad, Aher in UP. He completed his schooling in the government school and grew up listening to awe-inspiring stories from his father, who served in the Kumar regiment and had taken part both in the 1961 and 71 operations. At the age of 18, he joined the Indian Army as a soldier in the Grenadier Regiment. Within 2.5 years of his service and 15 days into matrimony, he took part in the world's toughest battlefield, that's the Battle of Kargil, where he displayed exemplary bravery and was awarded the Paramveer Jecrc. He is the youngest awardee as of date now. He then spent the rest of his life in the Indian Army, where he rose from a soldier to the highest rank, that is of a Subedar Major, who is considered to be the father figure of any regiment in the Indian Army. He has been conferred with the Yash Bharati Award in 2015 by the UP government, and he has been granted the honorary rank of a captain honors on the Independence Day in 2021. He superannuated in December 2021, and now he spends most of his time inspiring young people like you. Now let me tell you what is a PVC. The Paramveer Jecrc, as it translates, is a wheel of ultimate bravery. It is the highest military decoration awarded for displaying extraordinary and distinguished valor in the face of the enemy. From independence, we have had 21 awardees, most of it posthumous. Today, we have 3 living legends who lead our National Day parade on the Republic Day every year. Now, since he got his Paramveer Jecrc in the
Kargil War, let me give you a brief, I would say, insight into what the war was and why it occurred. Okay, post 1971, Indo-Pak War and the Shimla Agreement, we have what is called as a line of control which runs all along in Jammu and Kashmir across the Himalayas. Now this, in the Kargil sector, is running along what is called as the Jecrc range, and it has got heights above 5,000 meters where the temperature goes down below minus 60 degrees. One of the most difficult terrains to operate in. Both of us, India and Pakistan, have their differences along this. And during the Shimla Agreement, we had agreed that since the climate is very bad over there, we would vacate those posts during the winter months and only occupy them during summer months. Now, sometimes in 1998-99 winter, when our government was trying to make peace gestures towards our adversary Pakistan, and our troops had withdrawn during that year, Pakistan carried out a misadventure and infiltrated in the area of Kargil and occupied about 140 posts of us. It became a big issue for us. No international media, no international negotiations could work, and therefore we launched an operation called Operation Vijay, which lasted from May 99 to July 99, in which we had to pay very heavily. We lost about 527 men in that. We had 4 Paramveer Chakra awardees in that, and one of them is standing in front of you, Super Major and Honorary Captain Yogendra Singh Yadav. So let's begin the question and answer session. I think I must give him more time to speak. साहब, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी को अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो एक आर्मी मैन या फौजी को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरफ देखते हैं, मगर हम सबके लिए एक क्यूरियोसिटी है कि अब उस यंग एज में फौज भर्ती होने से पहले क्या था, क्या इंस्पिरेशन था आप में और किसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? थैंक यू जनरल साहब, मंचासीन, परम आदरणीय ओपी अग्रवाल जी, अनिल स्वरूप जी, अश्विन जी, प्रेसिडेंट साहब और मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों। परिवार एक बच्चे का सबसे प्राइमरी स्कूल्स होता है, माता पिता उसके पहले टीचर होते हैं। जैसे ही माता पिता जिस तरह से अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं, जो वो बातें बताते हैं, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालती है। जिस तरह से आपने अभी बताया और आप सब जानते भी हैं कि मेरे पिता एक फौजी थे, उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। तो जो गांव की जो परिपाटी होती है, गांव के जो संस्कार होते हैं कि गांव में शाम के समय लोग आपस में बैठ कर के दिन भर की परिचर्चा करते हैं। और मैं नौजवान साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज से 20 साल 25 साल पहले ये स्ट्रेस का कोई शब्द सुना ही नहीं था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि गांव का जो एक कल्चर था, गांव में आपस में बैठ कर के जब परिचर्चा करते थे तो दिन भर की जो काम होते थे उससे जो भी टेंशन थी, जो भी था, वो भी ख़त्म हो जाता था और आगे के दिन की क्या हमें करना है, क्या लाइफ में करना, उसकी भी परिचर्चा होती थी। तो स्ट्रेस का कोई शब्द का कहीं खाना ही नहीं था। तो पिता की उन बातों को सुन सुन करके जब मैं बड़ा हो रहा था
और जो स्कूल का कल्चर था, स्कूल का जो कल्चर था, उसमें जो एजुकेशन पॉलिसीज थी, बुक थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे शूरवीर योद्धाओं की कहानियां उसमें जरूर अंकित थी। तो मैंने 6th क्लास के अंदर ऐसे शूरवीर योद्धा की कहानी पढ़ी जिसने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान एक अकेला सैनिक अपनी आरसीएल गन से पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें के ऊपर निशाना लगाते लगाते खुद मां भारती की गोद में समाहित हो जाता है। सर, मैं उस कहानी को पढ़कर के बड़ा हुआ, जो एक 23 साल का इस देश का लड़का जो अपने जीवन को खुशहाली के साथ, ऐशो आराम के साथ जी सकता था, लेकिन उसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया। मैं उस योद्धा की कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ, जो एक ऐसा स्वाभिमानी लड़का जिसने कसम खा रखी थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और अपने पिस्टल की लास्ट बुलेट को अपने कनपटी पर रख करके मां भारती की गोद में समाहित हो जाता है। तो अपने आप में बड़ा गर्व फील हुआ कि मैं भी इसी देश का बेटा हूं, इसी धरती से मैं भी जन्म लिया है। तो उन्हीं भाव और भावनाओं से, क्योंकि आप सब जो यूथ है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आपका भी कोई एक रोल मॉडल होगा, एक आदर्श होगा, और जिस आदर्श को मान करके आप अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही आदर्श था, एक सैनिक। और जो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर अपने आदर्श की छवि अंकित हो जाती है, तो हम उसी अनुरूप अपने आप को जीना शुरू करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उसी अनुरूप पैदा होने शुरू होते हैं, हमारी कार्यशैली उसी प्रकार से होने लगती है। तो उन्हीं भाव और भावनाओं को, उन्हीं कार्यशैली से मैं इतना प्रेरित हुआ कि सर 12th क्लास का था, अभी पढ़ ही रहा था, 16 साल 5 महीने की उम्र थी और मैं सेना में भर्ती हो गया। यही भाव थे सर। So he's proved my point. Be inspired by everything that you read, see and watch. Okay, साहब अगला सवाल। मुझे याद है आप जैसे कारगिल के वॉर में एक और जानबाज, जिनका नाम साथी जो कैप्टन मनोज पांडे, उसका एक कोट मैं आपको बताता हूँ। Before he died, he gave this quote: "If death comes to me before I accomplish my mission, I will kill death." That was his conviction in his mind. साहब, आपने मौत को चुनौती दिया और एक्सट्रीम ब्रेवरी दिखाकर आपको सीबीसी से सम्मानित किया गया है। तो आप हमारे सब यंग माइंड को आपकी बैटलफील्ड एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जो फ्लीटिंग थॉट्स आपके माइंड में उस टाइम आए जब आप एक्चुअली वो लास्ट मोमेंट में थे, जब आपने मौत को बहुत क्लोज से देखा। क्या वो विल पावर था आपका, क्या वो मोटिवेशन था आपका? प्लीज आप सबको बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सर, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारी सोसाइटी है, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर, जब हम चाहे एजुकेशन से, चाहे हम खेल क्षेत्र से, चाहे किसी भी और सेक्टर से, जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होती है। और मैं एक ऐसी संस्था से था, आर्मी की संस्था। जिस तरह से आज आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहले वर्ष में आप प्रवेश किए हैं, ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ये नर्सरी है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे यहां पर आए हैं।
कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेगा, कोई किसी सेक्टर का कोर्स करेगा, कोई किसी का करेगा। और जहां पर ये शिक्षक हैं, ये एक उस कुम्हार की तरह हैं। कबीरदास का वो दोहा याद आता है, गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चूट। तो ये एक टीचर्स आपके उन जो खोट हैं उनको दूर करते हैं। और जिस तरह से डायरेक्टर सर ने आपको बताया भी था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां जो शिक्षक हैं ये आपकी आंतरिक शक्ति से आपको अवगत करा सकते हैं। ये कोई जादूगर नहीं कि ये अपना तमाम ज्ञान घोट करके आपको पिला दें और आप उससे जो है सक्सेस हो जाए। ये परमात्मा ने, उस भगवान ने वो शक्ति हम सबको दी है। ये टीचर्स हम उसे शक्ति से सिर्फ अवगत कराते हैं और सीखते तो हम स्वयं हैं, बढ़ते हम स्वयं हैं। बहुत सारी चीजों का सर ने जिक्र किया कि यहां जो अपने आप को इस कैंपस के लिए, इस एजुकेशन के लिए समर्पित करेगा, और समर्पण कैसा होना चाहिए? पानी की तरह होना चाहिए। हम रोज सुबह जब उठ करके किसी काम पर जाते हैं तो भोजन करके, रोटी खा करके जाते हैं। आटे में जब तक पानी नहीं मिलेगा तो उस आटे की रोटी नहीं बन सकती है। और पानी अपने अस्तित्व को खो देता है। कभी हम ये नहीं कहते कि पानी की रोटी भी नहीं, हम कहते हैं कि आटे की रोटियां बनी हैं, उसको खा करके हम अपने काम को पूर्ण करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो यहां पर एक शिक्षक, आप उसको समर्पित कीजिए। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो मिट्टी के अंदर भी पानी भी समर्पित होता है। पानी अपने अस्तित्व को भूल जाता है और मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उनको धूप में सुखाया भी जाता है और आग की भट्टी में तपाया भी जाता है, ताकि उस बर्तन के अंदर वो क्षमता, वो सक्षमता हो कि आने वाले भविष्य के समय में उसके अंदर वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो हम सिविलियन बच्चे जब फौज के अंदर गए तो हमें भी 9 महीने की तप्त भट्टी में डाल दिया गया। तो जो वहां के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपनी क्षमता, सक्षमता, योग्यता, कौशलता से हमें 9 महीने तक घड़ा, क्योंकि 9 महीने के बाद जब एक सिविलियन एक सैनिक के रूप में बाहर आता है तो वो कुंदन के टाइप में बन जाता है। क्योंकि जब वो फौज की वर्दी पहनता है, क्योंकि वो फौज की वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा है। वो वर्दी तिरंगे की आन बान और शान है। उस वर्दी को पहन करके वो सैनिक अपने आप को अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है। तो वो वर्दी पहनी क्योंकि सपने बचपन से देखता आ रहा था कि सैनिक बनूंगा और एक युद्ध लड़ूंगा। तो परमात्मा ने उसी दिशा की तरफ मुझे बढ़ा दिया। पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। कश्मीर में भारतीय सेना 1990 से और आज तक उग्रवादियों के बरखिलाफ जो युद्ध लड़ती चली आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान का सैनिक आज भी अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस राष्ट्र की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करता चला रहा है। तो उस लड़ाई में हिस्सा लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और वर्ष 1999 आया। वर्ष 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बने थे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो जानते थे कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर खड़े हो गए हैं। छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ चुना, क्योंकि जहां पर शांति होती है
वहीं पर उन्नति और विकास होता है। तो उसी तरह से दोनों ही राष्ट्र आगे की तरफ बढ़ने लगे। लाहौर बस यात्राएं हुई, समझौता एक्सप्रेस चली, लेकिन पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तो अपने मन के अंदर कुछ और ही ठाना हुआ था। उन्होंने 4 नई बटालियंस को रेज किया और कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक, एक ऐसे सेक्टर जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, जहां पर मानवता का जीवित रहना असंभव होता है। तो एक समझौता था कि सर्दियों के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आ जाएंगी। हमारी भारतीय सेना अपने बेस कैंप में आ गई, लेकिन पाकिस्तान की फौज वो अपने बेस कैंप में नहीं गई, बल्कि हमारी तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा जमा लिया और इतनी मजबूती के साथ उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया, इतनी भारी तादाद के अंदर स्टॉकिंग कर लिया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन्हीं के बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर, सबसे पहले उनको द्रास सेक्टर में हमें टास्क मिला तोलोलिंग टॉप को कैप्चर करने का। तोलोलिंग एक ऐसी पहाड़ी जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले उससे बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी थी, जिसने पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक किया हुआ था। उसको पुनः से खोलना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। तो उस पहाड़ी को कैप्चर करना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम सिद्ध हुआ। हमने उसको चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लिया। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, हमारी तमाम हरकतों को देख सकता है, हमारे तमाम मूवमेंट को फेल कर सकता है, लेकिन कहते हैं जब नीति और नियति अगर अच्छी हो तो परमात्मा भी साथ देता है। हम अपनी सरजमी के लिए लड़ रहे थे, अपनी सरजमी को वापस लेने के लिए लड़ रहे थे, तो परमात्मा भी देख रहा था। मौसम इतना खराब हुआ कि विजिबिलिटी 1 मीटर तक की भी नहीं थी। वो हमारे लिए एडवांटेज था कि हमने जब चढ़ना शुरू किया तो दुश्मन को यह एहसास तो हो गया कि भारतीय फौज ने ऊपर चढ़ना शुरू किया है, लेकिन किन रास्तों का इस्तेमाल करके ऊपर आ रहे हैं ये उनको आभास नहीं हुआ। हम चढ़ना शुरू हुआ, 2 रात ऊपर चढ़े और फिर दुश्मनों के साथ भिड़ गए। एक के बाद एक अटैक शुरू हुए और 22 दिन तक उस तोलोलिंग टॉप पर हम लड़ते रहे। 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में भारतीय सेना ने वो तोलोलिंग टॉप हमने पुनः प्राप्त किया। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के बाद हमें फिर एक टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का भी टास्क दिया गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जिस पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, बहुत विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ को कैप्चर करने के लिए हमारी जब बटालियन को चुना गया तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, एक युद्ध प्लान किया और इस युद्ध प्लान के तहत एक घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम उसका पुनर्गठन किया। उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए, कुछ नए जवानों को उसमें चयनित करना था। तो मैं नौजवान साथियों आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं है, उसके कर्म से है, उसके कार्य से है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं,
कोई विशेष योग्यता भी नहीं थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक आम सैनिक था। उस समय तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि 18 ग्रेनेडियर बराव कंपनी नंबर 5 प्लाटून का नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान है, इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना थके, बिना रुके चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, जितना भी हार्ड से हार्ड वर्क करोगे, जितने कठिन से कठिन परिस्थितियों से आप गुजरोगे, उतने ही आप मेंटली तौर के ऊपर आप स्ट्रांग बनते हुए चले जाओगे। और जितनी स्ट्रांगनेस आपकी मेंटली होगी, उतना ही आप हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो और अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हो। मेरा चयन हुआ उस टीम के अंदर उस काम की वजह से। पहाड़ी की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हम दिन भर कोई हरकत नहीं कर सकते थे सर, रात भर चलते थे और दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे। इस तरह से सर 2 रात और 1 दिन उस कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी और ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 23 साल हो गए हैं। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा था, रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ रहे थे। तो चढ़ेंगे तो आवाज तो होगा, पत्थर भी फिसलेंगे, उनकी भी आहट हुई। पत्थरों की आवाज, हम सब की आवाज से शायद दुश्मन के दोनों तरफ बंकर थे जो हमें अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई दिए, उन्हीं के बंकर से ऊपर जा रहे थे। उनकी आंखें खुली, उनको आभास हुआ कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब आ गई है। सर उन्होंने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायर कर दिया, हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे तब तक। सामने 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। वहां पर उनकी एक कंपनी की डिप्लॉयमेंट थी। लगभग 150 पाकिस्तानी सैनिक ऊपर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब आ गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू हुआ कि हम सर ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित था। लेकिन नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों से कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो इस देश के वो बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए आज उनकी जो सोच है, हिंदुस्तान का सैनिक चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए और उसके शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं
उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं हटते हैं। आपने देखा भी होगा, किसी सैनिक का पार्थिव शरीर अगर देखने का सौभाग्य मिला हो, उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, उसकी कभी पीठ पर गोलियों के निशान नहीं होते। हम सर दौड़ करके उनके बंकर में जा घुसे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका और 5 घंटे तक उनके बंकर से हम लड़ते रहे। चारों तरफ से आइसोलेट हो चुके थे, कट ऑफ हो चुके थे, कोई सपोर्ट था ही नहीं। 5 घंटे तक लड़ते लड़ते धीरे धीरे हमारा भी जब अम्युनिशन समाप्त होने लगा, तब हमें लगा कि अब हम क्या करें। लोगों की मानसिकता होती है कि फौजी है तो मरने के लिए ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फौजी मरने के लिए नहीं है, फौजी मारने के लिए होता है। और मैं यहां पे नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी एक समस्या आ गई थी। अम्नेशन नहीं है, बिना अम्नेशन के कैसे हम लड़ सकते हैं। आप लोगों के जीवन के अंदर भी जब कोई एक समस्या होती है, कोई बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो आप लोग तुरंत हताश और निराश हो जाते हैं। इतने नकारात्मक विचार आपके अंदर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि जीवन व्यर्थ है। और कई नौजवान साथी उसी नकारात्मक भाव के अंदर अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं। लेकिन वो कायरता वाला काम है। वो मां भारती के बेटे और बेटियां नहीं हैं। मां भारती के बेटे और बेटियां वीर हैं, वो पराक्रमी हैं, वो कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं। तो मैं उन निराशावादी व्यक्तियों को कहना चाहूंगा कि ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन इस राष्ट्र का है और ये जीवन उन माता पिताओं का है जिन्होंने इस धरती पर आपको लाया है। उन माता पिताओं का, और जब आपका है ही नहीं तो इस जीवन को समाप्त करने का आपको अधिकार किसने दे दिया? उसी विपत्ति में, उसी समस्या में हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के रास्ते छुपे होते हैं। जिस तरह से डायरेक्टर सर ने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर आप धैर्यवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, बुद्धिमान बनने के लिए आप आते हैं, तो धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे तो आपको उन्हीं समस्याओं से निकलने के रास्ते भी आपको नजर आ जाएंगे। हमें पता था कि हमारे पास अम्नेशन समाप्त होने वाला है, लेकिन दुश्मन के पास तो भरपूर मात्रा में अम्नेशन है। अब हमें दुश्मन के अम्नेशन को अपना अम्नेशन बनाना है, ताकि हम ज्यादा देर तक लड़ सकें और ज्यादा दुश्मनों का खात्मा कर सकें। तो हमारी फौज एक की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक, जो टॉप लेवल से लेकर के और जूनियर लेवल तक जो हमारा लीडर है, वो एक अद्भुत उनकी लीडरशिप। हमारा उस समय जो मेरा टीम लीडर, मेरा प्लेटून हवलदार मदन उस समय वहां था। उन्होंने तुरंत सूचना दी, सबको इकट्ठा किया, प्लान किया कि हमें दुश्मन के अम्नेशन को अपना अम्नेशन बनाना है। कैसे बना सकते हैं? जब दुश्मन का भारी गोलाबारी शुरू होगा, अपना फायर बंद करेंगे। जब अपना फायर बंद करेंगे, दुश्मन को लगेगा कि शायद ये मर गए हैं, वो दुश्मन पत्थरों से बाहर निकलेगा। दुश्मन पत्थरों से बाहर निकलेगा तो हम उनको चुन चुन करके मार सकते हैं, और जितने मारेंगे उतने हथियार और अम्नेशन हमारा होगा। इस तरह की प्लानिंग करके हम 3 अलग अलग पत्थरों के पास बैठ गए। उनकी भारी गोलाबारी शुरू हुई। 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, तो उनको भी लगा शायद ये मर गए हैं या इनका अम्नेशन समाप्त हो गया है। मुझे ज्ञात है बहुत बड़ा सामने पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते 10-12 पाकिस्तान के जवान निकल करके बिल्कुल ठीक हमारे सामने आ गए। जब वो बहुत करीब आए, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन किया था, एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्नेशन लेकर के हम फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो ऊपर की तरफ भागा,
उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान विद इन 30 मिनट 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला किया, और हमला इतना जबरदस्त कि उन्होंने हमें सर नहीं उठाने दिया। फिर ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू करे, ग्रेनेड फेंकने शुरू करे, लेकिन अपने धैर्य को हमने नहीं खोया, अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोया। चुपचाप हम बैठे रहे, नजदीक आने का इंतजार करने लगे। आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा, गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है, मैंने उन पलों को जिया है कि सैनिक का एक अंग कटता है लेकिन अंग की परवाह नहीं करता, बल्कि वो दुश्मन की तरफ बढ़ता है। मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, अपने साथी के सामने बैठा हुआ था। उस साथी को बोला कि आप मुझे फर्स्ट एड कर दो। वो फर्स्ट एड करने के लिए फील्ड पट्टी को, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहां तक पहुंचता है, इनको यहां पे गोली लगती है, यहां पर पूरा भेजा निकलता हुआ मैं देखता हूं। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, रूममेट ग्रेनेडियर अनंतराम, उसको मैं बोलता, सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से भी सिर्फ क्या शब्द सुनता हूं। उसको सीने में ब्रस्ट लगता है, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटते हुए उन पलों को जीता हूं। एक मेरा साथी खड़ा होता है तो वहां पर आरटी का बम गिरता है, उसकी गर्दन कटती है, गर्दन किस तरह से जमीन में फड़फड़ाती है और उसकी धड़ किस तरह से आगे चल करके गिरता है। उन पलों को जीता रहा, देखता रहा। और एक कैसा भी पल आया कि उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया, और वो गोलियों की बौछारें हुई, इसमें तमाम सैनिक शहीद, मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो मैं बेहोश था, लेकिन मैं बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। पाकिस्तान के जवान, हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां दागते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियों के ब्रस्ट मारे, फिर मेरे पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि गोलियों से जो लग रही थी धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने बहुत अमानवीय क्रूरताएं शुरू करी, हमारे बूट की ठोकरें मारनी, पत्थर मारने, गालियां देनी। बहुत देर तक ये तांडव करते रहे। जहां से हम चले थे रात को लगभग 500 मीटर नीचे हमारा एक मीडियम मशीन गन पोस्ट था। उस पोस्ट पर कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली, जहां उनका बेस कैंप था, उसको सूचित किया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर। तो जैसे ही आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरा पूरा टीम समाप्त हो जाएगा। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और मेरे नौजवान साथियों, अगर सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। काफी देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, एक हथियार उठाने लगा। लेकिन तब तक मैंने अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। वो दोबारा से उसी रोटेशन से सर गोली मारते हुए चले आए। फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम आगे चलने के बाद न जाने उसको क्या आभास हुआ, वो वापस मुड़ा। उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, और इस धरती को, इस देश को भारत मां बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोलती,
ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं बल्कि सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने वीरता, शौर्य दिखाते हुए जो बलिदान दिया है उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। तो तभी तो उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे और वो सिक्के भी इकट्ठे थे। वो गोली जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचित हो गई। मुझे भी लगा कि शायद मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा हथियार उठाया, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई। फिर लगा यार अब तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनमें खलबली मची, इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को और मौत के घाट उतार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस उन हो गए और वहां से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर तक खिसकता हुआ रेंगता फायर करते उनके पीछे गया तो 3-4 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके बड़े बड़े हथियारों का डिप्लॉयमेंट है। वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। वहां पर बहुत देर तक पड़ा रहा होगा। आकर के सर एक एक को देखने लगा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर तक रोता रहा, बैठता रहा, फिर अपने आप को संभाला, सोचने लगा कि नीचे जाना है, जाऊंगा तो किस रास्ते से जाऊंगा। सर 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, ना तो उम्र का तजुर्बा ना सर्विस का अनुभव, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, कहाँ जाऊं। रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश, ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये कट गया है। मन में आया कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की चेष्टा करी, टूटा ही नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसा लिया और फिर सोचता रहा, परमात्मा से एक ही अरदास करता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। और उस ईश्वर से सिर्फ इतना ही कहता रहा कि इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में लक्ष्य पर तिरंगा लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर उच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए। बस इतनी गहरी सोच के साथ पड़ा रहा। जैसा प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि इंसान के एक शरीर नहीं होता है, इंसान के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कर्ण शरीर। लोग बोलते हैं सर आपको दर्द नहीं हुआ था, दर्द मन से होता है, शरीर से कोई दर्द ही नहीं है। जब मन आपका लक्ष्य के पर होगा तो शरीर के अंदर कोई पीड़ा ही नहीं है। तभी एक ऐसी दिव्य आवाज सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़क गया। नीचे गया तो मेरे साथी नजर आए, उनको आवाज दिया, वहां से मुझे उठा करके लेके गए। जिस तरह से आप फिल्मों के अंदर देखते हैं ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े होते हैं, सेम कंडीशन था। कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा।
सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, बेटा मेरे को बता सकता ऊपर क्या हुआ? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूं। ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इंफॉर्मेशन उनको दिया और लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमिनेशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए नहीं चाहिए। साथियों 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। हम एक बड्डी पेयर, सिर्फ ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, हमने आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। सर भूख नहीं लगती है। इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीजफायर हो गया था, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने बेस हॉस्पिटल दिल्ली में रहा और उसके बाद फिर मैं वापस भारतीय सेना में 25 साल और 5 दिन की सेवा करके अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूं। Thank you very much. I think it was very emotional, and most of us, I think, have got now that fire in our heart कि कुछ करके दिखाना है। All right. साहब, आप भी फौज में रहे, मैं भी फौज में रहा। हमारे लिए ट्रेनिंग डोमेन स्किल जो हमारा स्किल है, जैसे आपका था एज एन इन्फेंट्री मैन, मेरा टेक्निकल था, मातृभूमि के लिए प्यार, बलिदान, अनुशासन, सबसे बड़ा भाईचारा, इज्जत, परंपरा, संस्कार, इंटेग्रिटी और सेल्फलेसनेस, ये सब हमारी टीचिंग्स होती है, सीखी दी जाती है हमको, और कूट कूट के अंदर हमारा भरा जाता है। तो इन सब को लेकर और आपकी जो ये एक्सपीरियंस रहा बैटल फील्ड में, जिससे आपको इतना बड़ा मोटिवेशन मिला, इसको मद्देनजर रखते हुए आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि युवा जो हमारा इस राष्ट्र की वो ताकत है, राष्ट्र की वो ऊर्जा है, और ये राष्ट्र आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। आपका रहने से लेकर के खाने तक, पढ़ने तक, तमाम चीजें इस राष्ट्र की तरफ से आपको मिल रही हैं। तो हम सबका भी एक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम इस राष्ट्र को क्या दें और हमें इस राष्ट्र को क्या देना चाहिए। आज तक आप अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप अपना कैरियर को अभी कैरियर बना रहे हैं, तो कैरियर के दौरान जब आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, आपसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि जहां पर भी रह करके जो काम कर रहे हैं, सिर्फ राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम कीजिए। अपने जीवन में अनुशासन को समाहित कीजिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में अनुशासन है, आपके जीवन के अंदर राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना है, आपके जीवन के अंदर अगर राष्ट्र भक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, तो आपके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि टाइम पंक्चुअलिटी और अनुशासन ये इंसान के दो ऐसे तत्व हैं जो आपको ऊंची से ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं और नीचे से नीचे गिरा भी सकते हैं। अगर जीवन में
अगर आपने आगे बढ़ना है राष्ट्र के लिए, खुद के लिए अगर कुछ करना है तो सर अपना जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम पंक्चुअलिटी, इंटेग्रिटी रखना निहायत जरूरी है। ये राष्ट्र हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार हमारे लहू के अंदर निहित हैं। उन संस्कारों के प्रति सजग रहिए, इस देश की संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और जितने आप इसको बढ़ाएंगे, अपनाएंगे, उतने ही आपके अंदर आंतरिक ऊर्जा का विकास होगा और जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती चली जाएगी उतने ही अंदर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती हुई चली जाएगी। नहीं सब यही मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही बताने के लिए आया हूं। Thank you very much, Saab. I'm sure everyone over here is inspired, especially the young minds that I can see here. ऑडियंस के पास और बहुत सवाल है साहब, लेकिन कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम की वजह से हमारे पास एक और गेस्ट बैठे हैं जो उनका सेशन है। इसके बाद हम जरूर आपको हमारे कैंपस में बुलाएंगे इसके बाद हमारे बाकी साथियों से मिलने के लिए। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल फ्रेशमैन फॉर ब्रिंगिंग सच अ गुड ऑडियंस। प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल दोज हु आर इंस्पायर्ड, प्लीज रेज योर हैंड्स प्लीज। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं पुनः तमाम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सैनिक हूं और आप भी एक सैनिक ही हैं। सैनिक सोच से बनता है और उस सोच कैसी होनी चाहिए, दो पंक्तियों में आपको कहना चाहूंगा कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस हिंदुस्तान के यूथ का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Das sir. And योगेंद्र सर से तो कुछ कहना मुझे लग रहा है मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। सर ने एक ऐसा समा बांधा है कि हर कोई आज ज़रूर देशभक्ति की बात कर रहा होगा। सर थैंक यू सो मच। और आपकी ताकत आपके विचार हैं और आशा करती हूँ कि सारे बच्चे आपके विचारों से बहुत कुछ सीख लेकर के आज जाएंगे। So I will now call upon one of the most respected personalities of our JECC University, Shri Arpit Agarwal sir, Vice Chairman, to please introduce our next guest, Shri Anil Swaroop ji. Arpit Agarwal sir is a charismatic mentor and coach who takes the leadership position. He is a rare combination of a leader and an executor. His association and network with students' community is the quality which is highly admired. His devotion to work and his involvement to the core is something to be inculcated by all. His passion for providing education and the best to his best possibility has always pushed him in devoting his time and energy in understanding the perspectives and providing quality education. Sir's personal touch to even the minutest and smallest issues always encourages all to perform their best. His connection with the young minds is what goes a long way and impacts them deep inside. Sir is an avid lifelong learner and is passionate about the growth of the university. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Morning, everyone. Morning, everyone. So it is an absolute honor and a great pleasure to be amongst you all today. I also extend a very warm welcome to the class of 22. Probably the largest induction program that JECC is hosting in last 22 years. I can see all the 5,000 chairs that we have
laid down has been taken. I am also super excited to interact with all of you, the young minds, but I'm sure I have to keep my excitement in check today, and I look forward to more opportunities to have some interactive sessions where we can share our aspirations on the campus. So today I have been given this responsibility to introduce, rather a tough job to introduce Anil sir to all of you. And sir, before I introduce, I must tell you that I am a big fan of the unique perspective that he shared through what Chanakya didn't say. I keep reading that every day on the social media, and you never fail to amaze me at all. And the nexus of good, the photographs and the unique perspective that you again share through your social media handles. I'm sure guys, if you haven't gone through those unique perspectives through such social media handles, I urge all of you to please go through, and I can bet that you'll not be disappointed. Thank you. So, allow me to read your brief profile for the audience benefit, sir. It makes me privileged to share that during his career, spanning over 38 years, sir attempted to make it happen. Born in Allahabad, Uttar Pradesh, sir has earned his master's degree in political science from Allahabad University in 1978, where he was also awarded the Chancellor's Gold Medal for being the best all-round student. Before joining the Indian Administrative Services, the IAS, in 1981, sir served in the Indian Police Services for a year. He won the Director's Gold Medal for the Best Officer Trainee at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration amongst the other officers of his batch as a civil servant. He held various assignments within both the state and central government during the final years of his career. He served as Secretary to Government of India in the Ministry of Coal, where he handled the aftermath of coal scam. Thereafter, he served as Secretary, School of Education and Literacy, where he attempted to foster public-private partnership to improve quality of school education. As a strategic thinker and as an innovative leader, sir won several awards and nominations, the prominent ones being nominated as one of the policy change agent by Economic Times during the years of 2010, 12, 15 and 2016. Sir was selected as one of the 35 action heroes in the India Today's 31st annual edition. He is the founder chairman of Nexus of Good, an initiative towards recognizing positive action and providing inspiration to the society at large to replicate them. He is also the author of the bestsellers Ethical Dilemma of a Civil Servant, Not Just a Civil Servant, and No More a Civil Servant. I must say words fall short for describing his magnanimity and aura. I feel immense pleasure in sharing that sir has been connected with JECRC family for a decade now and has been advising and hand-holding JECRC on critical aspects whenever we wanted sir to advise us. He was always there for us and has helped JECRC become what JECRC today. This is the second time after February 2017 when we are having the honor to hold an interactive session in person with sir. Be rest assured, the class of 22, that with his personality and prolific communication skills, you will get to hear pearls of wisdom and go home with something new and exciting that will provide you the required energy and motivation to begin with your career. Once again, I would want to warmly welcome the class of 22, and I look forward to more similar opportunities where we can share our aspirations and where we can always discuss how do we make JECRC and this world a better place for all of us together. Thank you, guys. Sir, this stage is all yours. Please welcome. My young friends and not so young friends, I leave you to decide whether you want to be young or not so young, but all are young. What a pleasure it is to be back here at the JECRC. I had been a great admirer of this university. When I came here in 2017, I had a great time. And that's why I say that all you youngsters who are now joining this family are truly blessed. Blessed because not many have this opportunity of being a part of such a family where you have brilliant future. And look at the galaxy of speakers that they've got today. There was Mr. Sanghvi, who matched myth with history and mystery. And there was a man of reality
who spoke so well that one wondered whether he should stop speaking. We wanted to hear and hear. But as they say, all good things come to an end. But hopefully I'll have the occasion to listen to Mr. Yadav once again, sometimes in the near future. Brilliant, brilliant. You're not only a brilliant soldier, you're a brilliant speaker as well. Now, what do I tell you? What do you tell these youngsters? You know, all of us are very good at blaming others for the problems that we have. Umr bhar yahi bhool karta raha ghalib, dhool chehre pe thi aina malta raha. Don't you all do that? You try and blame somebody else for the problems that you have. But the fact of the matter is, those that have succeeded in life are those that have not looked at others. They have focused on खुद ही को कब बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है. You just saw two gentlemen today. One, a renowned author, and the other who fought so bravely. Both these guys have made their khudi buland. They did not blame their surroundings. So I'm not here to give you any gyan, you know. I'm here to tell you or share some of my personal experiences and some thoughts on the potential that you all have to become great. The first and the foremost problem, which was alluded to by Mr. Sanghvi also, we all commit mistakes, don't we? Is there anybody sitting in this hall who hasn't committed a mistake? We've all had failures, even I had failures. And Mr. Ashwin mentioned so many failures that he faced in his life. Now, if you come to this conclusion that failures are natural, making mistakes are natural, it will give you enormous amount of confidence. You know, I can tell you an instance from my own personal experience. When I passed my class 12, I had physics, chemistry and maths. And those of you who have been from science discipline would know that you are so much focused, so much time gets consumed in doing physics, chemistry and maths that you don't have time to improve your communication skills, which are so very important in life. So when I joined my bachelor's, I did that in Allahabad University, I could barely speak or write 2-3 sentences in English or Hindi. And I had taken art subjects. Now it was virtually impossible for me to express myself. So what did I do? I entered into a drill and improved my communication skills, and gradually I became a reasonably good debater representing my university. In one of the competitions that were held, a national competition at IIT Kanpur in 1976, I went there as a part of the debating team of Allahabad University. But one day before the debating competition was a music competition. And I thought I was a reasonably good singer also. I'm sure many of you would think that you also are good singers. So I thought I'll participate in this music competition also without any preparation. So I went there, my name was announced, I went there, started singing, and as luck would have it, I picked up the wrong note. Within 10 seconds, this strong crowd booed me out of the auditorium. I just booed out because I was singing very poorly. When I came out, I was totally shattered. And I decided I will not participate in the debating competition on the following day. Now, one of my seniors, he came to me and he asked a very pertinent question, which I think you should also consider asking yourself. Anil, वो तो बीत गया, उसका तुम कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो उस जो बीत गया उसमें चिपके हुए क्यों खड़े हो? You know, how many of us are brooding about the past and not doing what you can do in the present? How many of us? Almost everyone spends so much time on the moments that have gone by that you don't have time to look into the present. And fair enough, all of you will soon realize, if you haven't already realized, that you can't do a nut to the past. It is already done and dusted. Only politicians and historians can change the past. You and I cannot. Even if we want, we can't change the past. So he gave me a long pep talk. I'm cutting a long story. So then finally I overcame my fears, and next day I decided to participate in the debating competition in the same hall. Not as big a crowd as this, there were about 1,500 children or students there. The moment they announced Anil Swaroop, everyone started shouting, Gayak aa gaya. They thought the same singer is coming here to give them another disastrous speech. But I had overcome my fears, and I spoke for whatever time that was given to me, and I won the first prize in the national debating competition, not looking back thereafter. It was a huge lesson for me. The lesson was twofold. Number one, we all commit mistakes.
The only relevance that the past has for us is to learn from the past and nothing else. You cannot live or dwell in the past. You have to dwell in the present. Second, I also realized that preparations are necessary for not committing a mistake. And third was, you can get away with committing the same mistake once, but not more than once. Huge lesson for me. And gradually, I not only debated, at some point in time, I started even composing music. So I practiced and went into music. So it's not that failure takes you down, you can do it. The second point that I'd like to bring to your notice is, we feel we can do a lot to others. The great old man, Mahatma Gandhi, said, be the change you wish to see in the world. So instead of seeing the change in yourself, you want to change others. And I realized that I can't do much to others. Whatever I can do is to myself. And you all will gradually realize what you can do is to yourself. The university here, this fabulous campus and fabulous people of this university can be facilitators. But whether you want to make the future for yourself is totally dependent on you. Not many people in this country have this opportunity as you have to make use of this wonderful infrastructure, the wonderful people around here. So make best of this opportunity and evolve as an individual to be reckoned with. And for that, as I was mentioning to you, you can't do much to others. We also waste a lot of time on issues over which we have absolutely no control. Think over it, whether you do or not. You do waste your time, you discuss about others over whom you don't have any control. I remember I had just joined the Indian Administrative Service, and around that time I used to get very agitated when I used to get stuck in a traffic jam. आप लोगों में से परेशान होता है जब ट्रैफिक जैम में फंसते हैं? वैसे जयपुर में कम होता है ट्रैफिक जैम, दिल्ली में बहुत होता है। तो मैं बहुत अपने बाल, अब तो बाल कम है मेरे, उस समय जितने भी थे उनको नोचता था, बड़ा परेशान होता था, क्या हो रहा है ये? तो एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली, कार में जा रहे थे, फिर ट्रैफिक जैम में फंस गए, मैं ना फिर मेरा खून खोलने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इनका कुछ कर सकते हो? मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे जब कुछ कर नहीं सकते अपना खून क्यों खोला रहे हो? We must understand this. There is a message here. Don't waste your time on the past. Don't waste your time over issues over which you have no control. अरे धोनी ने अगर वो शॉट नहीं खेला होता तो इंडिया जीत जाती। अब इसमें मैंने दोस्तों को लड़ाई लड़ते हुए देखा है। धोनी अपना खाट शॉट खेल के चला गया, अगला मैच खेल रहा होगा, लेकिन अभी तक हम उसी धोनी पे चिपके हुए लड़ रहे हैं उसके लिए। So जैसा इन्होंने बताया, before I joined the IS, I was in the police service. So one day, a batchmate of mine who recently retired as Director General of Police, he was then a young man, he still thinks he's young, I don't think he is, but he walked up to me and he asked me, boss, रात को नींद नहीं आ रही। हमने क्या हो गया? बॉस, पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। हमने कहा, यार पेट्रोलियम के दाम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रात को ना सोने से क्या पेट्रोलियम के दाम कम हो जाएंगे? बोले, नहीं बॉस, देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मैं ऐसे लोगों को मिस्टर परेशान कहता हूँ, सिर्फ परेशान रहते हैं, करते कुछ नहीं है। मैंने कहा, भैया सही कह रहा हो, वी कैन डिस्कस इट, बट बाई नॉट स्लीपिंग इन द नाइट डू यू थिंक द पेट्रोलियम प्राइसेस विल कम डाउन? बोला, यार बात तो सही कह रहे हो यार, मेरे रात को ना सोने से पेट्रोलियम दाम तो कम नहीं होंगे। चला गया, 3 महीने बाद फिर आया, फिर कहता बॉस रात को नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, क्या हो गया? बॉस, देश की आबादी बहुत बढ़ रही है। मैंने कहा, यार पेट्रोलियम के दाम तो अपने आप ठीक हो गए, तुम आप किस बात के लिए परेशान हो? नहीं बॉस, बहुत बढ़ रही है आबादी। मैंने कहा, रात को सो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगी। यू नो, See, the point that I'm trying to make here is, you have limited time. You have to decide what you want to spend time on. Whether you want to listen to the inspirational speech of the gentleman just who spoke before me, brilliant speech by a practitioner who did things. He was not a Gyani Purush. He spoke well, but he spoke from experience. Whether you want to listen to them or you want to listen to a lot of things that are going on this idiot box now, this thing. You can see, watch and waste your time there. It's for you to decide. No one else will tell you. You have to decide what you got to do. No one else will come and tell you what you got to do. The third point that I'd like to tell you, and you might find it a bit different from what was being told so far. You know, everyone talks about nation, and we should talk about nation. We should have a lot of josh. But if you don't have hosh, there is a problem here. It is good to talk about nation, we should think about nation, but you should think more about what you can do to yourself to contribute to the nation. I see so many people talking about the nation, doing nothing about themselves, and they think nation will improve if you don't do something to yourself. So you are the center of the universe. If you improve as an individual,
If you improve as a citizen, you will be able to contribute to nation building, and JECRC is an institution which will help you contribute to national building. So make use of that opportunity that you have. The fourth point that I'd like to mention before you is that we tend to compete with each other. That's a fault of the education system that we have. Everyone is competing with others without realizing that each individual is unique. You don't have to compete with others. Because if you compete with others, you will not be able to learn from them. Why? क्योंकि अगर आप उससे compete कर रहे हैं, वो आपसे compete कर रहा है, तो अपनी कॉपी तो दिखाएगा नहीं, आपको छुपा लेगा कि मुझसे compete कर रहा है. लेकिन अगर आप उससे सीखना चाह रहे हैं, and you realize the fact that each individual is unique, then you will be able to learn from each other. I did that. I learned from every individual that came in association with me. Even today at this old age, I learn from people. I learned a lot from the Paramveer Chakra winner. I learned a lot from the author. And I will learn a lot from you all as I interact with you all. So what you have to do is focus on yourself. खुद ही को बुलंद कीजिए आप. If you do that, the chances are that you'll succeed in life. But if you don't do that, then you'll keep criticizing others, you'll keep looking at others, but you'll never be able to do that. And final point that I'd like to make to you is that each one of you will have to look at what you want in life. You have to decide for yourself. Others may guide you, but you can't become an Amitabh. I mean, I'm using the word of Amitabh Bachchan because in my times he used to be a hero. Because when I was in university, I used to think if I grow my hair longer, I'd look like Amitabh Bachchan. And some of my friends thought if they could smoke well, they could look like Shatrughan Sinha. That's the biggest tragedy of our existence. Instead of being myself, I was trying to be somebody else. You know, I had often wondered, why do people have Mercedes car? You know, most of the Mercedes cars are driven by the drivers, not by the owners. So the pleasure of driving a good car goes to the driver. And mind you, I have sat in a number of Mercedes cars. If you close your eyes and sit behind in the car, it is very uncomfortable. But yet people buy Mercedes car. क्यों खरीदते हैं? पड़ोसी के लिए. They want to impress upon others that they want to have a Mercedes car. I am not against Mercedes cars, by the way. My contention is, do what you like, not for others. हम जितना मेकअप करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं. हम साड़ी अच्छी पहनते हैं किसके लिए? अपने करते हैं, दूसरे के लिए. अगर आप अपने लिए कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर काम दूसरे के लिए करते हैं. And we waste so much time on that. Think over it. If you do things that you like, probably you will not suffer in life, because I can tell you for sure from my personal experience, कि बहुत थोड़े से ही काम चल जाता है. ये जो ज्यादा की लालसा होती है वो दूसरे के लिए होती है, दूसरे को बताने के लिए. खुद का जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. हाँ, वो जैसे आज बाय खाते बैलेंस शीट वगैरह की बात हो रही थी, कीजिए. यू मस्ट हैव मनी, बट इफ यू डू नॉट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल यू कम टू बी एसोसिएटेड विद, यू लीड अ कंटेंटेड लाइफ. नाउ पीपल आस्क मी कि you led a very positive existence, you talk of positivity. क्या जीवन में ऐसे मौके नहीं आए जब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप भी डाउन एंड आउट? मैं भी कई बार हताश महसूस किया है, मैंने जीवन में कई बार हताश महसूस किया है. एक वाकया आपको बताना चाहूंगा. I was just posted as secretary horticulture in government of UP, and there was a lot of corruption there, and the minister was very corrupt. So one day उन्होंने एक आदेश, he sent me an order asking me to suspend the deputy director. So when the order came to me, there was no reason given. So I asked the minister on phone कि साहब आपने इसको सस्पेंड करने को कहा है, क्या किया इसने? वो मुझसे बोले मुझसे मिलने नहीं आया है. I was a bit surprised. नहीं मिलने आया, क्या बात है? Now I asked about that officer and I got to know he's a very honest and efficient officer. So I called that officer and asked him, यार तुम मिलने क्यों नहीं गए? मंत्री से बड़े नाराज हैं, तुम्हें सस्पेंड करना चाह रहे हैं. तो उसका जवाब ने मुझे थोड़ा अचंभित किया. उसने कहा, सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूं. Now those from UP and probably some part of us, Rajasthan, will understand what I mean. This minister wanted some money from him. नजराना, मैंने अपनी किताब में नजराना, शुक्राना, जबराना 3 प्रकार के करप्शन बताए हैं. ये नजराना चाहते थे. तो उसने कहा, सर मेरे पास तो पैसा है नहीं देने को, और होता भी तो मैं नहीं देता इनको. अब मेरे पास ये प्रॉब्लम थी कि इस ऑनेस्ट एफिशिएंट ऑफिसर को मैं कैसे बचाऊं. और मैं बहुत दुखी था उस समय. जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपके अंतर का कवि जो है वो जागृत हो जाता है, होता ना? या तो दुखी हो या बहुत प्रसन्न हो, तब कभी जागृत होता है. तो मैंने ये पंक्तियां लिख डाली उस समय. जब समस्या होती है तो आप राम की झोली में डालते हैं सब अपनी समस्याएं. मैंने कहा, संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में,
संशय नहीं मन में तेरी सृष्टि में या तुझ में, तू ही तू मेरे मन में समाया, सब कुछ मैंने तुझसे है पाया। फिर भी स्तब्ध हूँ, व्याकुल हूँ, अशांत हूँ, शायद अनजान हूँ। क्या यही जीवन है? जो पापी है, दुराचारी है, क्यों जीत रहा निरंतर है? स्पष्ट करो, अभिव्यक्त करो, कुछ तो करो मेरे राम। तो मैंने अपनी समस्या राम की झोली में डाल दी। लेकिन अगर आप, इफ यू आर एन ऑप्टिमिस्ट, इफ यू थिंक पॉजिटिवली, द आंसर विल कम टू यू। द आंसर केम इन माय फॉलोइंग लाइन्स which have been used in my books. समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए? अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए? उठो पथिक, उठो पथिक, मत भ्रमित हो, धूमिल अंधियारे में, श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ, मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। These were indeed inspiring lines for me, and I still use them to inspire myself, and I found a solution to the problem. Now, I'm not going to the details of what solution I found, but if you are an optimist, if you are positive in your nature, you'll be able to find. And before I conclude, one more incident on why do you do what you do. Each one of you sitting in this hall, there would be a reason for you to be sitting in this hall. Either it is an order from the university head office that you will not move out of this room, or some of you must have thought, बाहर बड़ी गर्मी है, अंदर ठंडा, यहाँ बैठ ले। तीसरे ने सोचा होगा यार कुछ बोलने बालने आ रहे हैं, सुन लेते हैं उनको क्या बोलना है। Everyone must have a reason. You're not mad to be sitting here just like that. You must have a reason. So my friends, you have to look for a reason for doing what you're doing. So I must narrate an incident to you. I was doing a scheme called Rashtriya Swasthya Bima Yojana. Now, this scheme was initially very difficult, but later on came to be recognized world over as one of the finest schemes of the world. UN, World Bank, everybody recognized it. So when Barack Obama became the president of the US, one of his advisors rang me up in Delhi, and he asked me to come over to US and make a presentation on our health insurance scheme. So I told him our health insurance is totally different. What can I tell you? But he insisted. So in one of the visits to Washington, I went to an institute called Brookings Institute that advises the president. And I made a presentation on RSBY, Rashtriya Swasthya Bima Yojana. After the presentation, we were having a cup of tea. This gentleman from Gates Foundation, I hope you've heard of this organization called Gates Foundation, he walks up to me and asks me, Mr. Swaroop, you are a civil servant, but you seem to be very passionate about what you're doing. What is the government giving you beyond your salary? A very interesting question. Why do some people work, some don't work? So after some thought, I asked the gentleman, I asked him, what does Gates Foundation get by helping poorest of the poor? You give them millions of dollars of rupees. What do you get out of it? He said, well, that's a job, but more than that, we derive a lot of satisfaction out of the help that we give to the poor. So I told him, you have answered your own question. The Rashtriya Swasthya Bima Yojana, which is now morphed into it is another name, that is for the poorest of the poor, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow, anyhow. That's good enough a kick for me to do what I am doing. You know, my friends, you have to look for the kick that you want in life. And then I narrated an incident to him. In this scheme, I used to visit these small hospitals that were empaneled. One day I had visited a hospital and I was talking to a patient who was a beneficiary under the scheme. Suddenly I heard a very feeble voice from behind. And there was this very old lady who was so old that she couldn't sit and she was calling me, Beta idhar aao. So I turned around, I went to her, I bent down and asked her, Mata ji, aap theek to hain? She tells me, Beta, main bahut takleef mein hu, lekin अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है. Then I said, माता जी फिर तो आप ठीक हो जाएंगे, अपने घर जाएंगे. नहीं बेटा, मैं तो भीख मांगती थी, मेरा कोई घर नहीं है. मैं तो बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी था वो भी भीख मांगता था. वो उसने तुम्हारा एक कार्ड देखा, मुझे अस्पताल ले आया. यहाँ अस्पताल वाले मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को. मैंने कहा नहीं माता जी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये निःशुल्क है, आप ठीक होंगी, घर जाएंगी. बोले नहीं नहीं बेटा, आप तो मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी. This carried on for 10 minutes and then she made a very remarkable statement. She says, बेटा ऊपर वाले जाके एक बार जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है. Now, in my book, I call them my Bharat Ratnas. My young friends, my request, suggestion, advice to all of you is, you have to look for your own kick. Don't look for what others like. Don't look what the other is wearing. Don't look what car he is driving. Look at what you want. Once you decide what you want, and in that decision,
People in JECC will help you to decide what is your next step, what is your objective. They can help you do that, but decision has to be yours. So long as it is your decision, I can assure you will not regret. My good wishes to all of you. My compliments to JECRC for organizing this wonderful function. God bless all of you. Thank you. Thank you so much, sir. Your words left us mesmerized, and I'm very sure the children must have taken all the good points that you have pointed out to them and the great advices that you have given to them on how to conduct their life. Thank you so much, sir. With this, we are about to come to an end of the program, and I would now request our Professor Emeritus, Professor D.P. Mishra, sir, to please deliver the gratitude note. Professor D.P. Mishra has 43 years of academic and administrative experience in academics. He started and established many colleges and run them with exemplary efficiency. He has been the founder registrar of the Technological University of the state of Maharashtra, established postgraduate departments in the university, helped establish research centers in different departments of the university as Dean R&D, has served as Executive Council and Academic Council and Planning Board member of the Technological University for 12 years. He went to Cranfield University, UK under Faculty Exchange Program for 1 semester. He has served as principal in P. Dr. BVP Institute of Technology and Engineering, Pranavar Nagar College of Pharmacy, has been with Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Mumbai, has offered consultancy services to industries for effluent treatment, simulation and design, piping engineering, and has been a guiding force to all of us in the university. Welcome, sir. Thank you, ma'am. And good noon to everyone present here. Honorable Chairman of JECRC University, Sri O.P. Agrawal Sahab, Sri Ashwin Sanghi ji, Sri Yogendra Yadav ji, who has left, the Vice Chairperson, Sri Amit Agrawal, Sri Anil Swarup ji, the Vice Chairperson, Sri Arpit Agrawal ji, the President, Victor Gambhir sir, all the deans and heads of the departments, the Registrar, Sri S.L. Agrawal, all the faculty members, the parents, and the students, and everybody present here. Tamso ma Jyotirgamya. This is what Vidya can do. Vidya is supposed to be three of the basic elements, tattva, in whole of the universe. These are Vidya, Shiva and Atma. ये तीनों तत्व पूरे विश्व में है, संसार में है। ये यूनिवर्सिटी विद्या तत्व को लेके आगे बढ़ती है। विद्या तत्व कोई मटेरियल एस्पेक्ट नहीं है, एनर्जी एस्पेक्ट नहीं है, विज्ञान से ऊपर है, वी कैन से मेटाफिजिक्स। ये अनुभव की जाती है, जैसे कोई मैटर और एनर्जी भी अनुभव की जाती है, वैसे विद्या तत्व अनुभव की जाती है। और इसका उपयोग हम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में करते हैं, जिसके लिए हम लोग आज सब उपस्थित हैं, जो ज्ञान का भंडार देती है। In the whole context, first of all, I would like to congratulate
and thank all the students from core of my heart who have opted to get admitted in this university. They are the ones who prefer to make this university their alma mater. We are obliged to you with a commitment to see that you achieve your destiny with flying colors. Thank you, all the students. We are also indebted to the parents who supported the desires of their wards to get admitted here. Thank you all. Be sure that your wards are in safe hands and their education is fully secured with this university. Thank you. Faculty of this university, they are the fulcrum of the whole activities in the university. They are the architects of the future of all who have come here. I thank them और मैं रियली उनको नमन करता हूँ. वो नमन के पात्र हैं जो सारा कुछ करेंगे. Honorable Chairman, he is the person whose vision and advice has kept this university in good stead. We pay tribute to you to establish such a marvelous university. This is nurturing the best of talents to shape the future of our nation. Thank you so much, sir. अश्विन सांगी जी वो विद्या मूर्ति हैं, विद्यासागर जो भी कहें, विद्या उनमें समाहित है और उसके कारण जिसमें विद्या बहुत हो वो एक पायस व्यक्तित्व बन जाता है. जहाँ ऐसे व्यक्ति जाएं वो जगह भी पायस हो जाती है. From the Tattvic Darshan point of view, he is Vidya by itself. Yes? Those who have stood up, if they sit down, that will look nice. Thank you. We are all obliged to you that you spend your valuable time here, inspired all the students. Many things you said, and that is one thing in today's time, students get depressed for very silly reasons many a time, and there is no place for depression at all. Sri Yogendra Yadav ji, he had been an icon of bravery, a Param Veer Chakradhari. He had to almost sacrifice his life when he was fighting at Tiger Hill. Nevertheless, he never lost his confidence and what is called Hoso Havas. He could manage the concurrence of Tiger Hill, and all he has explained about how Tiger Hill was conquered. Again, big lesson can be taken from him. All young persons who have come to this university, they have to keep on trying, never lose patience. The success comes by itself. I thank him, Yogendra Yadav ji, for enlightening
the whole crowd of students here. Sri Anil Swarupji, your exemplary achievement is most exciting and inspiring to all of us. You could spare your time to come to this place. You had come to JECRC in 2017. We wish you keep on coming and keep on inspiring us. You are saying that खुद ही मसीहा बन जाओ, खुद ही बुलंद करो अपने को इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तुम्हारी रजा क्या है. So again, whenever he encountered a problem, he had to tell oneself how he can overcome it, and every time he could do that. Those things he had explained in a big manner. We all can derive inspiration from him, and in future also when he come, we will get the opportunity to get inspired from him. Our Vice Chairperson, Sri Amit Agarwal ji, he is a visionary par excellence, whose guidance and directions on day-to-day basis to the university keeps the university run in most efficient manner. The entire fraternity of JECRC University expresses its gratitude to you, and thank you very much, sir. Vice Chairperson Sri Arpit Agrawal ji, he has a golden hand. He is running a gigantic organization, JECRC University, with his gigantic efforts. His presence leads to anybody not facing any problem. He guides always, everyone, keeps track of every small thing happening in the university, and the university is flourishing because of its great efforts. Our President, the Vice Chancellor, Dr. Victor Gambhir, he is the embodiment of wisdom. Everyone in the university gets direction of work from him all the time. He is in Sanskrit, Vice Chancellor means Kulguru also. Kulguru. If a university is a kul, a family, he is the real guru. And when he is there, everybody thinks that things can be sorted out in a most amicable manner. We are all so grateful to you that you are at the seat of Vice Chancellor, and the university will keep on getting the best directions from you in all the time in future. As usual, for media persons, we are obliged to the media who always give wide publicity to the university in the furtherance of its goal. Thank you, and thank you very much, all of you. I have to thank the anchor, because of whose efforts the entire event is conducted flawlessly. Last but not the least, whoever has contributed directly or indirectly for the conduct of this event, I thank them, and with all gratitude to them. Thanks to all,
once again. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सभी आदरणीय अतिथियों से निवेदन है, एक विनम्र निवेदन है, कृपया प्लीज़ अपनी सीट्स पे बैठे रहें। अभी प्रोग्राम बस थोड़ा सा ही बचा है। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम, एंड आफ्टर दैट वी हैव रिफ्रेशमेंट्स फॉर विच वी विल बी गोइंग ब्लॉक वाइज। तो जिस ब्लॉक का मैं अनाउंस करूंगी, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है केवल वही उठें, अदरवाइज डाइनिंग एरिया बिल्कुल भर जाएगा। थैंक यू सो मच। I request everyone to please take their seats. Only block F, केवल ब्लॉक F के अतिथि